Hello all, good evening. This is the Super League TSL 2022-23, a wonderful tournament. And I, Shalin Gupta, your commentator, welcomes all our viewers who are watching this game live on the YouTube channel of Jfsc Jolly Friends Sports Club and who have come all the way from their locations to watch this match live from the Fatima Cricket Ground in Vidya Vihar. This is a wonderful match happening in the B division today. The Accenture are locking horns against the Avengers, and Accenture have won the toss. They've elected to bat first. The captain of Accenture, Deepak, winning the toss, and the captain of Avengers, Ravi, being asked to bowl first. And we are ready with the first ball here. The bowler has taken his run up. The umpires are in their position. The fielders are waiting, and the batsman about to play the first delivery. Oh, and that's a wonderful start by the bowler. Absolutely perfect line to start the delivery and this innings. He started off his spell with a wonderful delivery. And Deepak and Prateek are the opening pair for Accenture. They won the toss. They've elected to bat first. We'll have to see how they fare with their batting at the end of 20 overs. That's a wonderful start. Another wonderful delivery by the opening bowler from the Avengers. Ram Mane is the opening bowler for the Avengers, and Prateek has taken strike. He started off well. This time should be a single, and this time a chance for a run out maybe, but a quick single taken. He's off the mark. Prateek starting off well, playing with a straight bat, and this is a really high quality tournament, the Super League TSL as we call it. And I'll be bringing you the English as well as the Hindi commentary in this match and the tournament as well. Oh, and that's a wonderful piece of bowling by Ram Mane. Oh, and that's a wide given by the umpire, probably slightly harsh by the umpire. Probably he's getting the perfect vision. It's tough for us to ascertain, but nonetheless a extra given by Ram Mane. He'll have to bowl that again. Oh, and this time a short delivery pulled by Deepak. What a shot that is, and no chance for the fielder there, and runs for the first boundary in the square leg region. It's a wonderful start by the captain Deepak. That was a short delivery and punished. That's the kind of start that you would want to have in the first over. Some runs off the bat, and this is a wonderful comeback by Ram Mane. What a brilliant delivery that was. Deepak Venkatesh, the captain of Accenture, 4 of just 2 deliveries. Prateek Surve. That's the end of the first over, 6 without loss. Ram Mane coming back really nicely on the last delivery. And this is a really high quality tournament. You'll find a lot of players in this tournament of really high quality, top notch players.
Gaurang is sharing the new ball with Ram Mane. Left armer coming into bowl. Oh, and that's a wonderful start by the left arm pacer, Gaurang Javle. Pratik Surve on strike. He's taking his time. 5 balls in 1 run. Deepak has started off well. 4 of just 2 deliveries. Edged but straight to the fielder there. No run taken. That's a wonderful start by Gaurang. He's pitching the ball in the right areas. In the air. Will that be caught? And he's gone. So Gaurang strikes and gets the reward for some wonderful piece of bowling. Pratik Surve was a bit uncomfortable and finally perishes in a very soft way. That was really a soft dismissal, and Gaurang gets the first wicket for his team, the breakthrough that they needed right from the start of this innings. And Accenture started poorly, 6 for 1. This was a simple catch taken by the fielder inside the ring, and that was such a wonderful delivery. It just bounced on him and rose after hitting the deck. So wonderful piece of bowling by Gaurang Javle. The new batsman is a left-handed batsman named Leon. That's a good start by Gaurang again to the new batsman. He's on fire there. The left-arm pacer. What a start he's given to his team, getting a wicket on just his third delivery, I beg your pardon, of a spell. In the air this time, but there was no fielder at cover point, so just a single sweeper cover there. And this is really good bowling, forcing the batsman to play in the air again. And Leon Fernandez off the mark. And this time a wonderful shot, but straight into the hands of the fielder, the third man, the short third. Takes a wonderful catch, and this is a big wicket. Deepak Venkatesh, the captain, has gone, and Gaurang is on fire. This is his second wicket. And what a start to the innings by the Avengers left arm pacer Gaurang Javle. That was such a wonderful catch by the short third fielder. It was a good shot, no doubt about it, but straight into the hands of the fielder. So probably missing the trick here, the Accenture team, after winning the toss and putting themselves into bat. 2 wickets down at the end of 2 overs. The score is 7 for 2. This is absolutely stunning stuff by Gaurang Javle. He has been on fire, the left arm pacer, and he's utilizing the new ball so well, this guy.
2 wickets and both the openers sent packing just in the second over and Gaurang's first. What a start by him. Absolutely stunning work there. Accenture would be disappointed. They have won the toss and elected to bat first. Haven't started off well. Deepak goes back on the score of 4 and the team score is 7 for 2 now after 2 overs. Official partners in the Super League. Sports Club, wonderful company, organizes really high level tournaments. Gives an opportunity to a lot of players on circuit to showcase their talent and play some really high quality cricket. This game is not like lights itself is wonderful. This game is for any player. Work by Gaurang. Mane coming back to bowl his second over. He started off so well in the spell as well. Oh, and this time a wonderful shot by Leon. And he's missed it. That's a poor bit of work and that's a boundary. Mane would not be happy at all. Should have just been a single there. The sweeper cover messes that up completely. And Leon, this is his first boundary. What a shot that was, but should have been only one, but he gets 3 extra runs. That goes to the boundary. Wonderful shot by Leon. This time it's down the leg side and a wide call by the umpire. Not a good delivery at all. So a boundary and then a wide on the follow-up delivery. You will have to improve the line there, Ram. Sachin Nachikar is the new batsman at the non-strikers and Ram Mane to Leon. That's a good delivery and a wide signal by the umpire again. Probably missing the line again. He's trying to bowl on that off stump. The intent was right, but the execution was not up to the mark. And these two players will have to build up a partnership now. A horrible start after winning the toss and opting to bat first, and Leon and Sachin will have to build a strong partnership. Oh, that's a wonderful shot. Oh, and he missed it. This is not the right way to field that ball. A sloppy work there by the fielder. He should have gone for the catch. He thought first that he'll go for the catch, but then he decided to probably stop the delivery. That was hit so hard. In an endeavor to stop the ball, he missed it completely, and that's a boundary. Leon Fernandez, what a shot that was. He seems to be really strong on the offside, this guy. It will be a treat to watch his batting, especially if he stays for long. Oh, and that's a wonderful shot again. Should be a boundary, but there's a fielder there. They're coming back for the second, but says no. Sachin. That was just a single, but that was a good shot played deliberately in the air. The third man does well there, just a single given.
Ram to Sachin. That's a good shot played by Sachin. Straight to the fielder. No run taken that time. Sachin Nachekar, this was his first delivery. We've got some really experienced umpires here. Yadu Churi and Om Singh, both veterans of the game and very experienced officials officiating in this wonderful tournament. And slower delivery this time by Ram. Played well Sachin, but no run taken. That's the penultimate delivery of the over, just one remaining. That's a good shot. Straight to the fielder again. A short delivery, but could not capitalize on that. That's a good over by Ram Mane after being hit for a couple of boundaries and a few wides. A good comeback by him. And the score is 3 overs and 18 for 2. And we'll take a short commercial break. Stay tuned. Gaurang coming into bowl his next over. He has been absolutely brilliant in his first over. That's a good start to his next over. A good stop by Vimerson at the mid wicket. And Leon Fernandez seems to be coming with a lot of intent today. A genuine stroke player, this guy. Brilliant hitter of the cricket ball. Gaurang to Leon. Oh, and what a shot that is. He's a wonderful player, this guy, and that's a wonderful stop as well. The Avengers are on fire on the field. The extra covers doing so well there. It's not allowing them to take even a single, and that's the kind of pressure that Gaurang is applying. Another good delivery, and this time playing well. Another good stop by the extra cover, but this time a single. And Ravi, the captain, such a wonderful player this guy is. We have seen his heroics so many times in the last season. We'll have to see how he fares in this season of the TSL, the Super League as they call it. Had some really high class, high quality matches in the last season. Would be no different this time for sure. Another good delivery, and they're taking a quick single. Oh, and he's missed it. That is some really good running, putting the pressure on the fielder inside the ring. He tried to pick it up with one hand and throw it immediately, but unfortunately he misses it. Oh, this time he's played so well towards the sweeper cover. Should just be a single, but he's playing with so much confidence. Leon, beg your pardon. Leon Fernandez. This is the fourth over in this first innings. 21 for 2. Not a very good start.
by any means, but they need to come back, build a partnership. Gaurang Zavade is on fire. He's already had 2 scalps in the air. That's a good stop by the fielder there. And that's the end of another wonderful over by Gaurang. So 4 overs have been bowled, 21 for 2. Accenture are trying to rebuild after those early setbacks. And we'll have a quick break and be right back. Stay tuned, viewers. Rohit Iyer has been introduced into the attack. Now on strike is Leon Fernandez. He's on fire already, this guy. Oh, and that's a poor start. Will be a wide for sure. Way outside the off stump. Oh, and this time a wonderful piece of bowling, a good comeback after that wide. Rohit Iyer starting off really well. This is his first over in the spell. Oh, another wide this time down the leg side, so not at all consistent with the line there, Rohit. Another single. And the third man, Sachin back on strike. Leon playing so well. 13 of just 11 deliveries after they lost 2 early wickets. This is a real good fight back by him. In the air that time, played deliberately. And it has just crossed the boundary. This was a wonderful shot by Sachin. A low full toss and he hits it in the air, away from the fielder. That covers and smashes it towards the cover boundary. This is his first boundary. Rohit has been a bit inconsistent with the line, and look at that. The inconsistency continues. Another wide.
This is just his first over and he's been expensive. Started off with a wide, came back nicely and then hasn't been up to his best. Oh, this time bowling the perfect line just outside the off stump. The length was impeccable. Could come back by him. Sachin had no idea about that. Coming to bowl his next delivery. Should be a wide again. The umpire doesn't give it a wide, so eventually a good delivery. This is the last delivery of his first over, Rohit Iyer. What a shot that is! In the gap! But that's a wonderful piece of fielding there. Just a single given. Absolutely stunning stuff there by the mid-on fielder. And that's the end of this fifth over. The score is 30 for 2. Accenture have lost 2 wickets. And now their 100 is 6 runs per over. And allow me to switch to the Hindi commentary now. We'll be presenting some Hindi commentary to all our viewers for the next 5 overs. स्वागत है सभी दर्शकों और श्रोताओं का द सुपर लीग टीएसएल के एक बेहतरीन मैच में। हर्षद पाटकर आए हैं अपना पहला ओवर लेकर और ये बहुत ही एक अजीब सा शॉट था। मारना चाह रहे थे ऑन साइड की तरफ लेकिन शायद भीतरी किनारा लगा और 1 रन मिला शॉट थर्ड मैन की दिशा में। और ये बहुत एक बेहतरीन मैच हो रहा है फातिमा क्रिकेट ग्राउंड पर। दी एवेंजर्स और एक्सेंचर दोनों बढ़िया टीमें ग्रुप बी की बी डिवीजन जिसे कहते हैं द सुपर लीग में। और एवेंजर्स को गेंदबाजी करने को कहा है एक्सेंचर्स ने टॉस जीतने के बाद आज। हर्षद पाटकर आए हैं छठा ओवर डालने। स्ट्राइक पे लियोन, बेहतरीन गेंदबाजी और इस बार बड़ा शॉट नहीं खेल पाए। हवा में खेलने से चूकते नहीं हैं। अगली गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी हर्षद की, वाह! पूरी तरीके से चूक गए यहां पर लियोन। द सुपर लीग टीएसएल ने पिछले साल धमाका किया था, इतना बेहतरीन टूर्नामेंट था ये। और ये इस साल फिर से वापस आ गया है जॉली फ्रेंड स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट। बहुत ही बेहतरीन इस फातिमा क्रिकेट ग्राउंड पर होता है ये। और ये मैदान बहुत ही जबरदस्त है। दूधिया रोशनी से जगमगाता हुआ ये मैदान, फ्लड लाइट्स की सफेद रोशनी से जगमगाता हुआ मैदान और उसके नीचे उस रोशनी के बीच में 22 दिग्गज खिलाड़ी, 2 बेहतरीन दल आपस में क्रिकेट के अपने हुनर दिखाते हुए। और इस बार हवा में शॉट खेला है और ये उन्होंने कैच छोड़ दिया ऐसा लग रहा है। बहुत बड़ी ये चूक हो सकती है इस मैच के अगर
कॉन्टेक्स्ट में बात करें, और ये बहुत बेहतरीन गेंदबाजी थी हर्षद पाटकर की। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास यहां पर लियोन का, पूरी तरह से चूक गए और कवर पॉइंट पे ये कैच लेने की कोशिश कर रहे थे शायद पॉइंट के फील्डर, लेकिन क्षेत्र रक्षक से बहुत बड़ी चूक हो सकती है इस कैच को छोड़ना। और बेहतरीन शॉट, और ये होता है जब आप किसी अच्छे खिलाड़ी का कैच छोड़ें। क्या जबरदस्त प्रहार है 4 रन के लिए। और लियोन को तो आप वैसे भी छोटी गेंद नहीं डाल सकते ऑफ स्टंप के बाहर, खतरनाक बल्लेबाजी है। एक टप्पा और बाउंड्री सीमा रेखा के पार। और ओवर की समाप्ति 6 ओवर के बाद 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। करारा प्रहार ये लियोन का। 18 पर खेल रहे हैं 16 गेंदों के बाद। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी इनकी। सचिन ने भी अच्छा साथ निभाया अभी तक। 2 विकेट बहुत जल्दी गंवा दिए थे इन्होंने। उसके बाद से एक साझेदारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक कोशिश सफल भी रही है। और लियोन के तो क्या ही कहने, क्या बेहतरीन शॉट था। एक गलती हुई, थोड़ी सी चूक हुई लेंथ में वहां पर हर्षद से, और लियोन ने उन्हें दिखाया कि आप जैसे ही चूकेंगे हम आपको उसका हर्जाना भर के देंगे। वही हुआ, चौके से हर्जाना भरना पड़ा हर्षद पाटकर को। और ओवर की समाप्ति 6 ओवर के बाद 36 पर 2। रोहित आए अपना अगला ओवर लेके। शुरुआत फिर से खराब, पिछले ओवर में भी वाइड से शुरुआत की थी इन्होंने। और नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं नई गेंद को रोहित। लेग साइड की तरफ वाइड। अब देखते हैं वापसी कर पाते हैं क्या इस गेंद पर। और ये क्या वापसी की है, वाह! सचिन नचेकर को क्लीन बोल कर दिया है। बेहतरीन गेंदबाजी, और इसे कहते हैं एक चैंपियन खिलाड़ी की निशानी कि आपने एक गलत गेंद डाली लेकिन उसके बाद जो वापसी की है आपने तो विकेट ही उखाड़ दिया और लेग स्टंप जमीन से बाहर हो गया। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी है। तीसरा विकेट डाउन यहां पर, तीसरी विफलता एक्सेंचर को और तीसरी सफलता एवेंजर्स को। 37 पर 3। और क्या बेहतरीन गेंदबाजी थी। इससे बढ़िया कोई दृश्य नहीं होता है किसी भी तेज गति के गेंदबाज के लिए कि कोई भी स्टंप अगर वो उड़ा दे बल्लेबाज का। और इस बार यही किया इन्होंने, लेग स्टंप को धरती से बाहर कर दिया। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। सुरेश कुंचिकोर भी नए बल्लेबाज। बढ़िया शुरुआत रोहित की। सुरेश को एक भी रन नहीं इस बार भी। और रोहित बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि पहला ओवर में रन भी खाए थे। और ये देखिए फिर से एक भारी किनारा, इस बार चौका मिलेगा। लेकिन ये गेंदबाजी बहुत ऊंचे दर्जे की हो रही है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद और ये 4 रन। जी हां, यहां पर एक स्लिप ले लेते अगर तो शायद विकेट मिल जाता है इन्हें, लेकिन नए बल्लेबाज के साथ स्लिप नहीं लगाई और शायद अब लगा रहे हैं स्लिप। ऐसा हो सकता है कि अब लगाएं। इन रोहित की तारीफ करनी होगी यहां पर। इनमें गति भी है और
ज़बरदस्त लाइन डालने की क्षमता भी, ऑफ स्टंप के आसपास ही रख रहे हैं। पहली गेंद हालांकि लेग स्टंप पे वाइड डाली थी, लेकिन उसके बाद क्या वापसी की है। और स्टंप्स में वैसे भी जब गेंद डालते हैं गेंदबाज तो बल्लेबाजों के लिए खासी मुश्किल तो होती ही है। रोहित भी वही रणनीति अपना रहे हैं, लेकिन क्या ज़बरदस्त गेंद थी। चौका मिला हालांकि। और देखिए ये खराब गेंदबाजी, लगता है बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी हमने इनकी। वाइड पर 1 रन ले लिया, और लेग साइड की वाइड तो वैसे भी कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती है क्रिकेट के किसी भी स्तर में। क्रिकेट में कमेंटेटर्स कर्स करके एक कहावत होती है, और जब हम किसी की तारीफ करें और बिल्कुल उसका उल्टा हो जाए, इस बार वही हुआ रोहित के साथ। कमेंटेटर्स कर्स लगा उन्हें, इसलिए कभी कभी तारीफ करना भी उल्टा साबित हो जाता है। बहुत बेहतरीन वापसी, और इस बार एक रन ले लिया बहुत जबरदस्त तरीके से। दोनों की रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत जबरदस्त है, दोनों बहुत ही तेज धावक हैं। खास करके लियोन मौका नहीं छोड़ते हैं किसी भी तरह से रन निकालने का, चाहे वो बैट से हो चाहे वो तेज भाग के हो। सुरेश कुंचिकोरवी ने भी बढ़िया शुरुआत की है, और ये फिर से वाइड बॉल। ये थोड़ा सा अपने आप से खुश नहीं होंगे, लगातार लेग साइड पे वाइड्स डाल रहे हैं। इस ओवर में विकेट लिया इन्होंने, इनको दबाव बनाना चाहिए, लेकिन ये उस पूरे दबाव को हटा रहे हैं वाइड्स डाल के। बेहतरीन गेंदबाजी, और ये देखिए इस बार भी तेजी से रन चुराना चाह रहे थे, लेकिन पॉइंट के क्षेत्र रक्षक ने मौका नहीं दिया। और यही तो लाइन डालनी है इन्हें, बार बार लेग स्टंप की तरफ जा रहे हैं, इसलिए खासे अतिरिक्त रन भी दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया शॉट, ये इस शॉट को बनाया इन्होंने, और 1 ही रन होगा हालांकि, लेकिन सुरेश कुंचिकोरवी की तारीफ करनी होगी। बढ़िया बल्लेबाज, सशक्त बल्लेबाज दोनों। सुरेश कुंचिकोरवी भी बहुत अच्छे तकनीक के धनी बल्लेबाज। 46 पर 3 7 ओवर के बाद रोहित अय्यर का एक और महंगा ओवर, हालांकि बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट लिया उन्होंने सचिन का। सुरेश कुंचिकोरवे और लियोन फर्नांडिस अब एक साझेदारी बनाने की कोशिश में, जो सचिन और लियोन के बीच भी हुई थी, लेकिन सचिन ने लियोन का साथ छोड़ा और पेविलियन वापस चले गए। हर्षद पाटकर आए हैं ना अगला ओवर लेकर, 1 रन लेंगे आराम से लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर। सुरेश, लियोन वापस स्ट्राइक पर। बेहतरीन गेंदबाजी, ब्लॉक होल में डाली गेंद, और लियोन को भी चकमा दिया इस बार, 1 भी रन नहीं। हर्षद पाटकर बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी। बढ़िया शॉट, लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 ही रन मिलेगा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है। और लियोन का विकेट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है यहां पर इस गेम, खेल के उपलक्ष्य में, मैच के उपलक्ष्य में बात करें तो। और ये 1 रन हो गया आराम से थर्डमैन की दिशा में।
जी, हम बात करते हैं लियोन फर्नांडिस के विकेट की। इस मैच के संदर्भ में बात करें तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये अकेले बल्लेबाज लग रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन लंबी पारी खेल सकते हैं और बॉलिंग टीम के गेंदबाजी दल के नाक में दम कर सकते हैं। और बहुत बेहतरीन शॉट, और क्या शॉट है, 4 रन, बेहतरीन प्रहार, अपना पूरा क्लास वहां पर दिखाते हुए। बहुत ज्यादा तेज नहीं मारा था ये शॉट, लेकिन कोई वहां पर मौका नहीं स्वीपर कवर के फील्डर के लिए। कवर्स पे चौका लिया इन्होंने। और ये 50 रन भी पूरे हुए एक्सेंचर के, 53 पर 3 8वें ओवर में। बहुत ही बेहतरीन ये वापसी की है। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, और ये एक टप्पे के बाद 4 रन सीधे सीमा रेखा के पार। बेहतरीन बल्लेबाजी है लियोन फर्नांडिस की। ये ओवर की समाप्ति 8 ओवर के बाद 57 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। जैसे ही हम इनके विकेट की महत्वपूर्ण होने की बात कर रहे थे, उन्होंने साबित भी कर दिया कि हम सही कह रहे हैं। 2 बेहतरीन चौके, और क्या गैप निकाले हैं, वाह। कोई क्षेत्र रक्षक नहीं थे भी, तो सिर्फ दर्शक की तरह देख रहे थे। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी लियोन की। और देखिए 28 पर आ गए हैं 21 गेंदों के बाद सिर्फ। क्या बेहतरीन शॉट्स खेल रहे हैं, ऑफ साइड पे तो बहुत ही ज्यादा सशक्त हैं। और जो अभी चौका लगाया सीधे गेंदबाज के सर के ऊपर से, काबिले तारीफ। अमोल सराफ आए ना एक गेंदबाज, बाएं हत्था गेंदबाज। बढ़िया शुरुआत, और ये वाइड से शुरुआत की है इन्होंने। अंपायर ने खासा सोचा और फिर निर्णय दिया। एक अतिरिक्त रन फिर से मिला, और ये बेहतरीन गेंदबाजी, और क्या ये कैच था। जी हां, ऐसा लग रहा है कि शायद ये कैच हो सकता था अमोल सराफ के। तो बहुत बेहतरीन गेंदबाजी है। और प्रतिक्रिया ऐसी थी अमोल सराफ की कि वो शायद एक एज था, बल्ले का बाहरी किनारा लगा था और विकेट कीपर ने कैच छोड़ दिया। हालांकि यहां से बोलना मुश्किल कि कैच था कि नहीं। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी इनकी। पहली गेंद वाइड जरूर डाली, लेकिन क्या बेहतरीन फ्लाइट रख रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा हथियार होता है किसी भी स्पिनर का। एक और बढ़िया गेंदबाजी, फिरकी तो डाल ही रहे हैं, साथ साथ सीधे गेंद भी डाल रहे हैं। और ये स्ट्रेटर वन डाल दी, कट करने का प्रयास, लेकिन विफल हुए यहां पर सुरेश कुंचिकोरवी। क्या जबरदस्त गेंदबाजी, 5 डॉट गेंदें वाइड के बाद, बेहतरीन गेंदबाजी। बाएं हत्था स्पिनर्स को खेलना वैसे भी बहुत मुश्किल माना जाता है। और ये देखिए गलत शॉट, और ये बच गए। बहुत बेहतरीन प्रयास यहां पर, लेकिन 2 रन मिल जाएंगे। और शॉट
लगाना चाह रहे थे ऑन साइड की तरफ, लेकिन कवर्स की दिशा में गया ये बाहरी किनारा लेकर, और मोटा किनारा लिया था इसीलिए बच गए। सीधे हाथ में जा सकती थी, वहां पर रवि खड़े थे कवर्स के क्षेत्र में। और ये 9 ओवर की समाप्ति के बाद 60 पर 3 एक्सेंचर, बढ़िया वापसी की इन्होंने। और ड्रिंक से पहले ये 1 ओवर और अंपायरों का इशारा अगले ओवर में ड्रिंक्स लाने के लिए। यहाँ रवि चौहान आ गए हैं गेंदबाजी पर, कप्तान हैं एवेंजर्स के और बेहतरीन खिलाड़ी हैं, कप्तानी भी बहुत अच्छी करते हैं। अपना पहला ओवर लेकर आए हैं, स्ट्राइक पर हैं लियोन फर्नांडिस। बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है इन दोनों के बीच। एक रन ले लिया आराम से, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। बेहतरीन शॉट, और ये गैप में खेला है शॉट। ये पहली बाउंड्री हो सकती है, जी हां, सीमा रेखा के पार। सुरेश की पहली बाउंड्री है। रवि ने उनको मौका दिया यहां पर, जगह बनाकर अच्छी खासी दूरी मिली थी उन्हें शॉट खेलने की, और उन्होंने उस दूरी का फायदा उठाया। बहुत जगह मिली थी, बढ़िया शॉट 4 रन के लिए। इनकी पहली बाउंड्री है। माफ कीजिएगा, दूसरी बाउंड्री है इनकी। पहली बाउंड्री तो उन्होंने जब मारी थी जब बाहरी किनारा लग के पीछे गई थी, जैसे ही आए थे बल्लेबाजी पे। और ये एलबीडब्ल्यू की अपील यहां पर बोल्ड हो गए। जी हां, क्या गेंदबाजी है वाह रवि चौहान। इस खिलाड़ी को आप खेल से बाहर नहीं रख सकते हैं। ऑफ स्टंप उड़ा दिया है इतनी घातक फिर की गेंदबाजी से। बेहतरीन ऑफ स्पिनर है और ऑफ स्टंप भी उड़ाया, वाह। और क्या गेंदबाजी थी ये। और ये चौथा विकेट एक्सेंचर का पेविलियन की तरफ जाता हुआ। अब शायद ड्रिंक्स भी हो जाएंगे। जी हां, 9.3 ओवर और 65 पर 4। एक्सेंचर खेल तो अच्छा रहे हैं, लेकिन विकेट बहुत जल्दी गंवा रहे हैं, और 4 विकेट अच्छे खासे गंवा चुके हैं वो पहले 10 ओवरों में ही। तो ये अच्छे संकेत नहीं है उनके लिए। और हम भी एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आपके साथ जुड़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
रितेश शिंदे आए नए बल्लेबाज। रवि चौहान की चौथी गेंद इस ओवर की, विकेट के बाद पहली गेंद। और ब्रेक के बाद आपका वापस स्वागत करते हैं। मैं शालीन गुप्ता, आपका कमेंटेटर, आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूं। और एक्सेंचर की टीम 66 पर 4, 9.4 ओवरों में बल्लेबाजी का फैसला लिया इन्होंने टॉस जीतने के बाद। और वो निर्णय अभी तक बहुत अच्छा साबित तो नहीं हुआ है। हालांकि लियोन फर्नांडिस जब तक हैं तब तक एक्सेंचर की नैया पार लग सकती है। अब देखना है कि लियोन कैसा खेलते हैं। 10 ओवर तक तो उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की है। और ये बढ़िया शॉट, मेरे हिसाब से बल्ला लगा है यहां पर, या शायद बैटिंग ग्लव से कुछ तो संपर्क हुआ है। देखना है कि क्या ये वाइड है। जी नहीं, 2 रन मिले यहां पर बल्लेबाज को, तो ये सही सोचा था हमने। और बढ़िया शॉट भी था ये। हालांकि अगर नहीं मारते तो वाइड जरूर मिल जाती, लेकिन रन बहुत कीमती कैसे भी आए, वाइड से आए या बल्ले से आए, सबसे कीमती समय रन होंगे एक्सेंचर के लिए। और इस बार बहुत बेहतरीन समाप्ति ओवर की। 10 ओवर के बाद स्कोर हो गया 68 पे 4। और एक्सेंचर कोशिश कर रहे हैं वापसी करने की। और अब हमें आज्ञा दीजिए कि हम अंग्रेजी कमेंट्री की तरफ वापस अग्रसर होंगे। हर 5 ओवरों के बाद हम कमेंट्री की भाषा चेंज करते हैं। अंग्रेजी और हिंदी में ये प्रसारण आपके लिए जेएफएससी के यूट्यूब चैनल पर। And as informed, we've switched to the English commentary now. And Ritesh Shinde is on strike. Amol Saraf coming into bowl his next over. The left arm spinner, he's been really good with his bowling in the first over. This is his second over. 10 over 68 for 4, Accenture. Even Stevens in terms of the performance till now. They have a lot of talent, but they've lost wickets. So these two players do have a lot of responsibility. They will have to build a partnership. That's a good delivery, a flighted one, but played really well towards the sweeper cover. Ritesh Shinde is playing quite well here. Just a single this time. Harshad Patkar fields it nicely. Just 10 overs remaining in this innings, less than 10 actually now. Leon back on strike. He has been the aggressor today. 31 of 24 deliveries. Has managed the entire show with the bat today, all by himself. Not much support from the other end. Has been seeing partners going back to the pavilion and new partners coming in. Oh, and this time he's gone. This is an absolute peach of a delivery. Amol Saraf has done the trick. And Leon, we were praising him so high, but this time he loses focus and probably the wrong shot played to the flighted delivery. And Amol Saraf, he has been absolutely accurate. This time he's just targeted the off stump and hit it really well. This is the 5th wicket down for Accenture, and they are in deep trouble now. Their premier batsman Leon Fernandez going back to the pavilion was clean bowled by Amol Saraf. What a delivery that was. Absolutely wonderful stuff. And Accenture will have to now play out of their skins if they want to bat the entire 20 overs. The kind of bowling Avengers are doing right now will be a really tough ask, because Leon was the player who was actually toying with the bowling. He had no problem whatsoever till now, but the delivery by Amol Saraf, that was a peach.
And this is the 5th wicket down on the score of 69. Darshan is the new batsman. He'll take strike. Mol Saraf is on fire. This is just his second over and he's already taken his first wicket. The left arm spinner would be definitely eyeing a couple more in his spell. Oh, and what a start for the new batsman. That's a good piece of batting as well. And they're coming back for the second. This is a wonderful piece of running. And Darshan showing great intent right from the word go. They were slightly sloppy on the field this time, and Darshan is showing the bowling team that he has come with a lot of intent and takes 2 runs brilliantly. What a second run that was. That's what happens when you take the first run quickly. So a lot of learning for youngsters who are watching this match. What a shot that is. Will that be a big one? And that's a boundary. That's a wonderful shot. And Darshan seems to be in business right from the word go. What a shot that was. There was no fielder. He picked the right gap between the long on and the deep mid wicket. Another boundary there for Accenture, and Darshan playing so positively. He's played just 2 deliveries and 6 runs. He's already made a couple and a boundary on the last delivery. Amol Saraf will have to come back. We'll have to see this, how he comes back. Another good shot by Darshan. What a wonderful shot this was, straight to the fielder. Should have gone for the single though. Doesn't go for the single. Probably Ritesh asking him to take more strike. That will be right as well for Accenture. The good thing would be Darshan stays for as long as possible, and that's a wonderful shot again. And that's a good stop and a single taken. So that's the end of a good over, a successful over, but 8 runs of the over as well. So 11 overs have been bowled, 76 for 5, and Darshan coming into the act. Ravi Chavan starting his new over. Good delivery and a single taken by Darshan. Oh, and that's a wonderful piece of bowling. Wonderfully flighted delivery. And that's a good delivery, but played well towards the point. A single taken. And they're rotating the strike quite well, both these players. Another good shot straight to the fielder though. Long off does well, just a single. Ravi Chauhan bowling really well. He's the captain of the Avenger team.
Until now, the Avengers have done a pretty good job. They've taken 5 wickets of just 79 runs, but they will have to be careful. They should not be allowing them to reach a score of 150 plus. This should be a leg by. Was that a wide? We'll have to see what the umpire signals. And leg by signal by the umpire. So this is a good piece of work there. Couple taken. Oh, and what a wonderful piece of bowling there. Ritesh Shinde trying to hit the big shot, just not able to connect. Had no clue of that delivery. That's the end of a very good over by Ravi. Just 5 of the over. The score is 81 for 5 after 12 overs. A single to start the over. Amol Saraf bowling his third over. Darshan taking a single in the sweeper coverage. Wonderful shot. Oh, and this time he misses that. So Ritesh gets his first boundary. And poor fielding there by the sweeper cover fielder, allowing Ritesh to get his first boundary. That was a good shot. That was a short delivery, not a good delivery at all. And he played it really well towards the sweeper. The sweeper fielder does sloppy work there. This allows them to get 3 extra runs and a boundary. It's a wonderful piece of work by Ritesh. Another good delivery this time. That's a good comeback after that boundary was scored off his previous delivery. A dot. Amol Saraf to Ritesh once again. Oh, what a shot that is. Picked it up brilliantly. And that's a huge 6. Wow. Absolutely brilliant shot. Straight down the ground. And trying to give the flight once again. But Ritesh this time was absolutely ready for that. That was a stunning piece of work by Ritesh. He's taken him for 11 runs till now, and 10 of the previous 2 deliveries. One was scored by Darshan, who's now on the other end. Oh, and this is a really good delivery. He seems to be a really thinking bowler, this guy, Amol Saraf. Not afraid of pitching it up, and that is what makes you a champion bowler. Even if you get hit for a 6, do you have the ability to come back with some aggressive bowling? Oh, and that's a wonderful piece of bowling. Ritesh trying to be on the back foot there and thought of cutting that towards the point region, but could not connect, and that's a good comeback after that 6 was hit brilliantly by Ritesh on his bowling. Amol Saraf doing a good job. 13 overs have been bowled, 92 for 5, and their run rate is now above 7 runs an over, courtesy some really good partnership between Ritesh Shinde and Darshan. And it seems Gaurang Chawla, the hero
till now in this Avengers bowling lineup has been asked to bowl the next over. Probably they are sensing that they need a wicket right now, and Gaurang is the best guy without doubt to be given that responsibility by the captain. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Gaurang starting with a good delivery outside the off stump, and a quick single taken there. That was a dot delivery, I beg your pardon. Darshan is on strike and he doesn't take the single this time. He's really quick between the wickets. I'm surprised. How did he not run this time for the single? Probably he thought he hit the ball quite quickly towards the... Oh, and that's a wonderful delivery, and this is the real class of this batsman. He is the one. This bowler, I beg your pardon, he bowls the perfect line, the nagging line, and the length has been brilliant as well till now. So 92 for 5 after 13.2. Gaurang is on fire. He's bowled such a wonderful spell today. That's a good delivery again, played well with a solid punch towards the long off. The fielder does well, but easy single taken by Darshan and Ritesh is on fire. Darshan started off as an aggressor, but Ritesh is the one who's actually now taking it to the opposition. Absolutely stunning piece of stroke play by Ritesh in the last over that he played. And this time a wonderful piece of bowling there. Gaurang Javre, such a wonderful bowler he is, always has his thinking hat on as a bowler. The best thing about his bowling is he's not predictable. You cannot predict what kind of a delivery he would bowl. He bowls the in-swingers, he bowls the ones that go away from the batsman as well. Just a dot delivery again this time, and he has the ability to bowl a nagging line and length continuously for a long time. Ritesh this time playing another dot. So just one run of the 5 deliveries, and that is what Gaurang Javre is all about. Doesn't give you any chance to score runs. That's what has happened till now in his spell. This is a 14th over, 93 for 5. Oh, and this is a good ball to finish the over. Quick single taken. That's a good piece of work there. That's the end of another wonderful over. Just 2 runs of that over, and he's a class act, this guy, the left arm pacer, Gaurang Javre. 94 for 5 after 14. And Ritesh will retain the strike after the single was taken on the last delivery. We'll take a quick break and be right back. Stay tuned, viewers.
that's a wonderful shot to start the over. Rohit Iyer, it seems. And that's 2 runs taken. This is wonderful piece of work there. These guys have been brilliant with the running as well. Ritesh Shinde this time pushing for the couple. Darshan always ready for the single there. A wonderful runner as well. That's a wonderful shot. And this is a boundary. What a shot that is. Ritesh is on fire. Rohit Iyer again proving to be a bit expensive. This time not erring in the line, but some really good shots by Ritesh, and that's the 100 for Accenture in the 15th over. They would be happy with the effort considering the start that they had got. Oh, and that's a brilliant shot over the point fielder. What a shot that is. Another boundary, and he is on fire now, Ritesh Shinde. That was a class act. Rohit Iyer, very short with the length. That too outside the off stump. And Ritesh Shinde, such a batsman, he is not going to miss such opportunities. 24 of 17 now. He's been on fire, this guy. Another good delivery. Will just be a single though. But a lot of runs scored in this over already. 11 of the over. Till now, 2 deliveries still remaining. And Ritesh is on fire. He's on 25 of just 18 deliveries. Darshan, 11 of 10. He's back on strike, and we can expect a lot of fireworks in the last few overs. Oh, and that's a wonderful shot. He's gone this time. It seemed for a moment that he's in the right gap, but that's a wonderful catch. And Rohit Iyer, even when he's expensive almost in his every over, he has the knack of picking up wickets. This is his second wicket. That's a good catch by the long off fielder. And Darshan, after starting off reliever, he's not happy with himself. You can see that. He knew for a fact that this was a ball that he should have converted into few runs and not got out too. But that's the end of his innings. Some good bowling by Rohit and a very good catch taken by the long off fielder. 105 for 6. Accenture, 14.5 overs. And Rohit gets his second wicket. We'll be back after a quick commercial break. Stay tuned, viewers. Faisal Khan, the new batsman. Rohit Iyer almost got him there. That's the end of his third over. Again expensive, but then has a knack of picking up important wickets. And this time he picked up Darshan. So 15 overs have been bowled. The score is 106 for 6. And allow me to switch to the Hindi commentary now for the last 5 overs.
जी हाँ, आप हिंदी कमेंट्री प्रस्तुत करेंगे अपने सभी दर्शकों के लिए और हर्षद पाटकर आए हैं अपना अगला ओवर लेकर। बेहतरीन शॉट यहाँ पर, एक रन और दूसरे के लिए आना चाह रहे थे लेकिन बेहतरीन यहाँ पर क्षेत्र रक्षण लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र रक्षक का। एक ही रन लेने दिया और इस बार फिर से एक रन होगा। बढ़िया शॉट। क्या इस बार दूसरे रन के लिए आएंगे? जी नहीं, क्षेत्र रक्षण अव्वल दर्जे का रहा है यहां पर। बहुत ही उच्च स्तरीय प्रयास हुए हैं। कैचेस भी एक से एक लिए गए हैं। गेंद को लपकने में माहिर यहां पर एवेंजर्स के क्षेत्र रक्षक। लेकिन रितेश शिंदे की तारीफ करनी होगी, 26 रन पर आ गए हैं सिर्फ 19 गेंदों के बाद। क्या शॉट्स लगाए हैं अभी तक, बेहतरीन बल्लेबाजी। लेकिन हर्षद पाटकर की भी तारीफ करनी होगी, बहुत ही मजे हुए अनुभवी खिलाड़ी। और देखिए इस बार एक भी रन नहीं दिया। आखिरी 4 ओवर और 3 गेंदें बची हैं इस पहली पारी की और ये वाइड होनी चाहिए ऐसा लग रहा है। जिन्हें अंपायर ने यहाँ पर गेंदबाज का साथ दिया, वाइड नहीं करार दी और बल्लेबाज ने उसको छोड़ा ही था कि शायद उन्हें एक वाइड और अतिरिक्त रन मिल जाए। हालांकि ये रणनीति उनकी विफल हुई और ये फुल टॉस गेंद, बढ़िया शॉट रितेश का, लेकिन एक ही रन होगा। और यहां पर थोड़ी सी चूक हुई यहां पर, लचर क्षेत्र रक्षण। जी हाँ, और 2 रन ले लिए। और रितेश के बारे में तो क्या ही कहने, जरा सा मौका मिलता है तो रन ऐसे चुरा लेते हैं जिसके कोई कहने ही नहीं है। रितेश शिंदे इस ओवर की अंतिम गेंद और ये बेहतरीन कोशिश, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास लेकिन सीधे हाथ में गेंद गया तेजी से। लेकिन आसान कैच नहीं होते हैं ये, नीचे की तरफ झुकना पड़ा था यहां पर क्षेत्र रक्षक को। और हर्षद थोड़े से नाखुश। हालांकि ये कैच बहुत मुश्किल था, अगर ये कैच लपक लेते तो शायद इस प्रतियोगिता का अभी तक का सबसे बढ़िया कैच हो सकता था। शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र रक्षक ने बहुत बढ़िया कोशिश की लेकिन ओवर की समाप्ति हो गई है। 16 ओवर के बाद 111 पर 6 रितेश वापस स्ट्राइक पर आएंगे। आखिरी गेंद पर 1 रन लिया उन्होंने। राम माने आए हैं अगला ओवर लेकर, इनके 2 ओवर हो चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी इन्होंने नई गेंद से। देखना है कि पुरानी गेंद से किस तरह खेल दिखाते हैं, जौहर दिखाते हैं अपने। आखिरी 4 ओवर बचे हैं। बेहतरीन शॉट रितेश का, लेकिन सीधे क्षेत्र रक्षक के हाथ में। और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बहुत ही करारा प्रहार था लेकिन क्या जबरदस्त रोका है। कितने जबरदस्त खिलाड़ी है। अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं अपने साथी खिलाड़ियों को और बहुत ही बेहतरीन उनका ये प्रयास भी था, अभिवादन के पात्र बने। छोटी गेंद यहां पर, करारा प्रहार फैसल का, फैसल खान। एक रन लिया आराम से लॉन्ग ऑन की तरफ खेलकर। रितेश वापस स्ट्राइक पर, 30 पर आ गए हैं रितेश सिर्फ 24 गेंदों के बाद। और ऐसे ही खेलते रहे तो अपने अर्धशतक की तरफ आसानी से पहुंच जाएंगे। खराब गेंद, छोटी गेंद, रितेश ने उसको खेला है स्वीपर कवर की तरफ। एक ही रन मिलेगा। हालांकि रितेश थोड़ा सा चूक गए यहां पर, बड़ा शॉट लगा सकते थे इस पे पॉइंट के ऊपर से और वो भी यही शायद सोच रहे हैं। राम माने अच्छे गेंदबाज लेकिन शायद थोड़ी सी वहां पर ओस आ गई है, ड्यू आ गई है, जिसकी वजह से गेंद पोंछनी पड़ रही है बार बार। ये महीने ऐसे होते हैं जहां पर ओस ड्यू का बहुत ज़्यादा जमावड़ा रहता है किसी भी मैदान पर। बहुत बढ़िया यहाँ पर क्षेत्र रक्षण, एक ही रन दिया। करारा प्रहार था फैजल का
लॉन्ग ऑन के क्षेत्र रक्षक ने बेहतरीन क्षेत्र रक्षण करते हुए सिर्फ एक ही रन दिया। राम माने की 2 गेंदें बची हैं, इनका तीसरा ओवर है ये। 17 ओवर चल रहा है, 115 पर 6। एक्सेंचर बेहतरीन बल्लेबाजी इन्होंने की है। शुरुआत के 2 विकेट बहुत जल्दी इन्होंने गंवाए थे, इतनी क्षति के बावजूद। बढ़िया शॉट, जी हाँ, फ्लिक किया है यहाँ पर बॉटम हैंड का खासा जोर लगाकर, और एक ही रन मिलेगा, लेकिन शॉट बहुत बेहतरीन था। रितेश शिंदे में कलात्मकता कूट कूट कर भरी है, जिसे क्लास कहते हैं क्रिकेट की भाषा में, वो इनमें कूट कूट कर भरा है एक बल्लेबाज के तौर पर। फैजल स्ट्राइक पर, और ये बेहतरीन शॉट, खराब गेंद, और इसको उन्होंने जबरदस्त यहां पर तरीके से खेल दिया है। डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 4 रन। जैसे कोई डॉक्टर इलाज करता है एक बीमारी का जो कि खराब चीज होती है, वैसे इलाज किया इस खराब गेंद का फैजल ने। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर एक्सेंचर की। 3 ओवर बचे हैं, 120 का स्कोर उन्होंने यहां पर खड़ा कर दिया है। 150 तक जाना चाहेंगे, लेकिन हर्षद पाटकर का 1 ओवर है अभी। देखते हैं कि इस ओवर को किस तरह खेलते हैं, क्योंकि ये ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण, और 150 का अगर इन्हें स्कोर चाहिए तो इस ओवर में भी पिटाई करनी पड़ेगी। बेहतरीन शॉट, एक ही रन, बहुत ही बेहतरीन क्षेत्र रक्षण लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र रक्षक द्वारा। बहुत बेहतरीन शॉट, और क्या ये चौका होगा? जी हां, और जबरदस्त यहां पर रोका है, वाह, जितनी भी तारीफ की जाए कम। बहुत बेहतरीन यहां पर क्षेत्र रक्षण, 2 ही रन मिलेंगे। एक और बेहतरीन गेंद, हर्षद पाटकर जबरदस्त गेंदबाज, और डॉट गेंद इस बार। और ये खराब गेंद, वाइड, और एक अतिरिक्त रन यहां पर स्कोर में जुड़ता हुआ। 124 का स्कोर, 15 गेंदें अभी भी बची हैं, 150 जाना चाहेंगे कम से कम। क्या बेहतरीन शॉट है फैजल का, क्या ये यहां पर बड़ा शॉट है? जी हां, 4 रन डीप मिड विकेट पर, बढ़िया शॉट खेलते हुए 4 रन के लिए। विमर्शन की यहां पर बेहतरीन कोशिश, अच्छा प्रयास, लेकिन पहुंच नहीं पाए, गेंद रोक नहीं पाए, और 130 का स्कोर हो गया है। 128 माफ कीजिएगा, 14 गेंदें अभी भी बची हैं। और जैसा कि हमें लग रहा था कि इस ओवर में भी बड़े शॉट्स लगाने पड़ेंगे, प्रहार करने पड़ेंगे करारे, और 8 रन ले चुके हैं 4 गेंदों पर, 2 गेंदें बची हैं। बेहतरीन शॉट, और इस बार भी कुछ ऐसा लग रहा है कि एक ही रन हुआ इस बार। बेहतरीन क्षेत्ररक्षण भी था, बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिल रही है यहाँ पर फातिमा क्रिकेट ग्राउंड पर। द सुपर लीग TSL का एक बहुत ही उच्च स्तरीय मैच हो रहा है एवेंजर्स और एक्सेंचर के बीच। एक और 1 रन लिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, और ये हर्षद पाटकर के 4 ओवर समाप्त। थोड़ा सा महंगा हो गया ये ओवर, इसके अलावा तो सारे ओवर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त डाले हैं। 18 ओवर के बाद 130 6 के नुकसान पर, और आखिरी 12 गेंदें बची हैं 2 ओवर। 150 रन का आंकड़ा तो छूना ही चाहेंगे, और रितेश भी चाहेंगे कि अपना अर्धशतक पूरा करें।
34 पर खेल रहे हैं। बेहतरीन शॉट और ये 4 रन। क्या बल्लेबाजी है, वाह। और वो भी गौरांग को मारा है, वाह। इस तरह की क्रिकेट देखने के लिए तो दूर दूर से लोग आए हैं फातिमा क्रिकेट ग्राउंड पर, और इस मैदान पर ऐसी बल्लेबाजी देखकर सभी दर्शक झूम उठे होंगे। रितेश शिंदे की बेहतरीन बल्लेबाजी, 28 रन, 38 रन माफ कीजिएगा, 29 गेंदों पर। और नाबाद खेल रहे हैं अभी भी। गौरांग जावड़े सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं अभी तक एवेंजर्स के, और उनको भी अगर मार रहे हैं तो इस बल्लेबाज का जो आत्मविश्वास है आप समझ सकते हैं इस समय 7वें आसमान पर होगा। बेहतरीन शॉट, 4 रन। क्या बल्लेबाजी है, वाह। और ये बहुत ही एक कलात्मक शॉट। अब दिमाग भी बहुत तेज चल रहा है, बल्ला तो चल ही रहा है रितेश का, लेकिन मानना पड़ेगा यहां पर क्या शॉट लगाया। शॉट थर्ड मैन थोड़ा सा बैकवर्ड पॉइंट के पास खड़ा था और अच्छा खासा यहां पर गैप था, और उस गैप को बेहतरीन तरीके से भेदा है। गौरांग जावड़े की 2 गेंदों पर 2 चौके। देखते हैं किस तरह वापसी करते हैं। बहुत बेहतरीन गेंदबाज हैं ये, और इस बार ये बच गए। क्या बेहतरीन गेंदबाजी गौरांग की, वापस कैच दे बैठते ऐसा लग रहा था। गौरांग की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। 2 गेंदों पर चौके खाने के बाद लगातार क्या वापसी की इन्होंने, वाह। फुल शॉट खेलना चाह रहे थे, हालांकि बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगी गेंद और वापस हाथ में आने वाली थी गौरांग के, बच गए यहां पर रितेश। अगली गेंद गौरांग की, देखते हैं क्या करते हैं। और ये स्लोअर गेंद, क्या शॉट मारा है यहां पर, क्या चौका होगा जी। आप बेहतरीन शॉट, रितेश शिंदे क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, वाह। और इस खेल में जान ले आए हैं वो अपनी बल्लेबाजी से। 46 पर आ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि इसी ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर सकते हैं। क्या बल्लेबाजी है, वाह। सबसे बेहतरीन शॉटों में से एक लगाया उन्होंने इस पूरी पारी में अभी तक। पिछली गेंद पर गौरांग जावड़े को 3 चौके मारना कोई मजाक की बात नहीं है। ये वही गेंदबाज हैं जिन्होंने शुरुआत में एक्सेंचर की कमर तोड़ दी थी। और इनको इस तरह धराशायी करना बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी। एक और अच्छा शॉट, एक ही रन मिलेगा इस बार। बढ़िया क्षेत्र रक्षण। और इस ओवर में 13 रन बन चुके हैं अभी तक 5 गेंदों पर, और खासे नाखुश दिख रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन उच्च स्तरीय गेंदबाज हैं, लेकिन अच्छे गेंदबाजों को भी T20 में कभी कभी इस तरह की बल्लेबाजी का सामना करना पड़ता है। और ये देखिए विकेट ले लिया इन्होंने फैजल खान का, और यही एक खास बात है किसी भी चैंपियन गेंदबाज में कि वापसी करते जरूर हैं। और गौरांग का यह तीसरा विकेट, 4 ओवर में 3 विकेट ले लिए गौरांग ने। हालांकि 13 रन दे दिए, लेकिन अगर 19वें ओवर में नहीं मारेंगे तो फिर कब मारेंगे एक्सेंचर। 143 पर 7 19 ओवर के बाद फैजल खान वापस जाते हुए पेविलियन की तरफ। और एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम भी हाजिर होंगे आखिरी ओवर के लिए। तब तक आप बने रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।
स्वागत करना चाहेंगे आपका एक बार फिर से द सुपर लीग में। TSL का ये बेहतरीन मैच हो रहा है फातिमा क्रिकेट ग्राउंड विद्या विहार मुंबई में। मैं शालीन गुप्ता आपका कमेंटेटर हिंदी कमेंट्री लेकर प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष। 143 पर 7 एक्सेंचर इन्होंने टॉस जीता आज और बल्लेबाजी का फैसला किया। 19 ओवर के बाद 143 आखिरी ओवर बचा है इस पहली पारी का और आखिरी 6 गेंदों में देखना है रोहित अय्यर क्या कुछ कर पाते हैं। रितेश शिंदे तो आज बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर करारा प्रहार, क्या है चौका होगा? और बहुत ही जबरदस्त यहां पर क्षेत्र रक्षण, एक ही रन दिया। क्या बेहतरीन क्षेत्र रक्षण है इस पूरे दल का। एवेंजर्स की तारीफ करनी होगी, जिस तरह की फील्डिंग दिखाई है उन्होंने। आसान नहीं होता है किसी भी दल के लिए इतनी जबरदस्त फील्डिंग पूरे मैच में करते रहना। और ये बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है यहां पर। जयराज बिष्ट हैं नए बल्लेबाज और ये 6 रन, वाह क्या शॉट है। जी हां 6 रन, ये बेहतरीन शॉट, अंपायर का इशारा 6 का। और जयराज बिष्ट ने आते ही क्या जबरदस्त प्रहार किया है और 150 रन पूरे हुए इस शॉट के साथ। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी और 144 था स्कोर और जयराज ने पहली गेंद पर 6 लगाकर 150 पहुंचा दिया स्कोर। आज शॉट है, वाह। और ये बहुत बढ़िया क्षेत्र रक्षण, 2 रन के लिए वापस आना चाहेंगे और आ भी रहे हैं और ये आउट। रितेश आउट हो गए यहां पर जयराज को स्ट्राइक देने के प्रयास में। और बहुत ही बेहतरीन मैं कहूंगा ये क्षेत्र रक्षण और ये विकेट यहां पर गिरता हुआ, और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट। रितेश शिंदे अपने अर्धशतक से सिर्फ 2 रन से चूक गए। क्या बल्लेबाजी की इन्होंने, 48 रन 34 गेंदों पर और जयराज को स्ट्राइक देने के प्रयास में, क्योंकि जयराज ने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। अभी तक 2 ही गेंद खेली थी और पहली गेंद पर बड़ा छक्का लगाया था। अपने विकेट की भी चिंता नहीं की, अपने विकेट का भी उन्होंने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया उस पर, और इसे कहते हैं उच्च स्तरीय टीम भावना। रितेश शिंदे की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और रितेश ने दिखा दिया कि टीम से बड़ा कुछ नहीं होता है, कोई भी खिलाड़ी टीम से ऊपर नहीं होता है। और जी हाँ, रितेश शिंदे बेहतरीन बल्लेबाज और 48 की बेहतरीन पारी, छोटी गेंद और यहां पर इतनी अच्छी गेंद के बावजूद 4 रन यहां पर चले जाएंगे विकेट कीपर की त्रुटि के कारण। जी हाँ, 4 रन 22 के मिल गए यहां पर। खुश नहीं होंगे रोहित, हालांकि उनके आंकड़ों में नहीं जुड़ते हैं ये रन, लेकिन टीम के आंकड़ों में तो जुड़ते ही हैं। 155 रन हो गया है स्कोर एक्सेंचर का। खुश होंगे अपने इस प्रयास से, क्योंकि एक समय लग रहा था कि 150 ही पहुंच पाएंगे कि नहीं। बढ़िया शॉट जयराज का, पर फिर से लग रहा है चौका होगा, तेजी से भागते हुए वहां पर। और क्या ये 4 है? जी हाँ 4 रन। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ खेला हुआ बेहतरीन शॉट जयराज बिष्ट। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं और खेल का रुख पलट सा दिया है इस ओवर में। जयराज के आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली है। हालांकि आखिरी ओवर है, एक ही गेंद बची है। फिर आप देखिए 1-6, एक विकेट गिरता है, फिर 1 रन के बाद 4-22 और 16 रन बन चुके हैं इस ओवर में, और एक गेंद अभी भी बची है। देखना है कि क्या करते हैं इस गेंद पर जयराज। बेहतरीन शॉट, लेकिन यहां पर एक क्षेत्र रक्षण अच्छा किया। यहां पर क्षेत्र रक्षक ने 2 रन के लिए आगे, तीसरे के लिए आना चाह रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि तीसरा लेंगे। और 161 पर 8, क्या बेहतरीन स्कोर से समाप्ति की है इन्होंने अपनी पारी की। और जयराज बिष्ट की भी तारीफ करनी होगी, 5 गेंदों पर 13 रन, वाह। बहुत बेहतरीन स्ट्राइक रेट, 260 के स्ट्राइक रेट से खेले ये। और 162 का लक्ष्य दिया है एक्सेंचर ने एवेंजर्स को। अब देखना है कि एवेंजर्स किस तरह इस लक्ष्य को पाने के लिए आते हैं। जब बल्लेबाजी करने आएंगे और थोड़ी देर में आपके साथ वापस जुड़ेंगे करीबन 10 मिनट के ब्रेक के बाद दूसरी पारी में। मैं शालीन गुप्ता आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, और 10 मिनट बाद फिर से हम दूसरी पारी के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।
We're back live with the second innings of this match. The first delivery about to be bowled here. That's a good start. A single taken by the Avengers batsmen, and they've started nicely with the first run on the board on the very first delivery. Shalin Gupta, your commentator, welcomes all of viewers back to the second innings of the TSL match between the Avengers and the Accentures. The Accenture team making 161 in their 20 overs, and 162 is the target. Rohit Iyer and Ravi Chawan are the opening batsmen. And Ravi's off the mark straight away, and Rohit playing in the air. That's a good shot, but what a wonderful stop that was by the point fielder. Absolutely brilliant stuff there. Jfsc Tsl is the opening bowler for the Accenture. A Division B match in the TSL, the Super League. Ravi Chawan, the captain of Avengers, on strike again. Both the batsmen off the mark on the very first deliveries that they've faced. Jfsc coming into bowl. His next delivery, Ravi on strike. Oh, and what a peach of a delivery that was. He's a tall guy and a very experienced campaigner, Jfsc Tsl. And he hits some lusty blows in the last over to take the score to 161 for his team. Absolutely brilliant all-rounder this guy is. Starting off with the new ball. That's a wonderful piece of bowling till now. Oh, and this time another good delivery. Sticking to that off-stump line. This is really good bowling. This was slightly wide outside the off-stump, but Ravi not able to connect. Another dot. That's a wonderful start by Jfsc with the new ball. Oh, and this time quite a wide delivery, played so well by Ravi Chawan. That was width on offer, and Ravi playing it brilliantly towards the deep point region for a boundary. This is the first boundary of the second innings, and Ravi Chawan into the act right from the word go. This is the first over, and the first boundary scored by Ravi. Brilliant batting this is by the captain of the Avengers team. That was a poor delivery, to be honest. Was bowling some really good line till that boundary was scored. We'll have to see how he comes back. Jfsc Tsl. And that's a very good delivery to end the over. So good comeback by the tall pacer. The first over has been bowled, 6 without loss. That's a good start by both the teams. We'll take a quick break and we'll be back soon. Stay tuned, viewers. On strike is Rohit Iyer now. This is the second over in the innings, and Pratik Surve starting off his first over. That's a good delivery outside the off stump, but skidded through. Rohit trying to hit that, did not connect. Oh, and a short delivery, and Rohit plays it over and above the short fine fielder. Will this go to the boundary? It doesn't seem so. A couple taken easily. So good stuff by Rohit Iyer. That was a very short delivery, almost a half tracker there. And that too, drifting on the leg side.
this time, another good shot this time towards the third man and coming back for the second again. This is really good batting by Rohit. Not trying anything extra. Oh, and this time seems this will be overthrown. And is that a boundary? Another extra run given. That was not a boundary. So 3 runs added to Rohit's score. Some poor backing up leading to an overthrow there. And Ravi Chauhan back on strike. Pratik Surve. Oh, and that's a wonderful delivery. It's come back nicely there. Oh, and this time, wonderful piece of bowling. Trying to hit the big shot, just not connecting there. Oh, and that's a wonderful piece of batting this time, but straight to the fielder. That's the end of a good over by Pratik. 2 overs have been bowled, 11 without loss. That's a good start by Avengers as well. And Accenture bowling really well in the first 6 overs. The power play, which Avengers would like to cash in on. Jairaj coming into bowl his next over. On strike is Rohit. That's a good shot. Is that going to be a boundary? This will be a boundary for sure. That's a wonderful shot and absolutely wonderful piece of batting by Rohit Iyer. And he is definitely meaning a lot of business here. Has come with a very positive intent. Already 10 of the 5 deliveries that he's faced. His strike rate is soaring really high, 200 at the moment. They've started off well, the opening pair of the Avengers. The third over running here. Jairaj with his second. Oh, and this time a wide. That's what happens when you are hit for a boundary on the first delivery. So the batsman getting a psychological advantage there over the bowler. He needs to not lose his line. Jairaj not try anything extra, as it may lead to extras. That was the case in the previous delivery, a wide. He will have to bowl that again and an extra run given as well. What a shot by Rohit this time. Absolutely stunning batting this is by Rohit Iyer. He's on fire, this guy. Brilliant stuff by Rohit Iyer. One bounce into the fence and that was played on the up. What a shot that was. Probably the shot of the evening till now. We've seen some really good shots by Ritesh Shinde in the first innings, and Rohit Iyer is no less. What a shot that was. Absolutely stunning hit. Straight down the ground. No chance for the mid-off fielder. And there's a long off now. Pushed him back. Oh, another wonderful shot. Crashed it towards the sweeper cover. And he's missed that. Will be a boundary, it seems. It is a boundary. Oh, and this is really superb batting, but sloppy bit of work. The same had happened when Accenture were also batting. A couple of boundaries were given by the Avengers as well, and this time probably returning the favour. The fielders there. And Rohit Iyer is on fire. 3 boundaries in this over. Jairaj Besh being taken for a lot of runs. He's dealing with him severely, Rohit Iyer. Absolutely stunning batting. Already 13 of the over. Just 3 deliveries have been bowled. Already an expensive over. We'll have to see how he fares now. Jairaj.
Oh, and he's playing so well, Rohit Iyer, with a straight bat all the time. Raj coming back nicely, but the damage has already been done in this over. 13 already, and they're 24 for no loss in just 2.4 overs. They're cruising, these guys. 162 is not a big ask, but then it's a tricky score as well. If they lose a couple of wickets earlier, which did happen with Accenture, could be a tough journey ahead in this innings. Oh, this is played so well, and what a shot that is! Probably the best shot of the evening. He's caressing it through the point region for a boundary. What a shot! Rohit Iyer is on fire, this guy. This is the 4th boundary of this over. He's already on 22 of 9 deliveries. What a player. This was probably the best of the lot. It was not a poor delivery, but he gave it the right direction and played it so well away from the fielder. Earned him another boundary. Niraj Bisht bowling the last delivery. Oh, and this time he almost nicked it. That's a good comeback, and that's the end of a very expensive over. 17 of that over, courtesy some blitzkrieg by Rohit Iyer, I beg your pardon. And the score is 28 for no loss after 3 overs. Ravi Chavan will be taking strike, and we'll be back after a short commercial break. Stay tuned, viewers. Pratik coming into bowl his next over. On strike is Ravi. Oh, and this time edge, and should be a boundary, will be a boundary. That was a thick edge. Running away towards the 3rd man region, he gets a boundary. Pratik will be disappointed. This is not a bad delivery. He should have had a slip there, he must be thinking. Ravi Chavan into the act as well. Boundary. Oh, and this time a short delivery again. Ravi not able to cash in on that not so good a delivery. Just a dot. Hits it straight back to the bowler. Oh, and this time in the air, and what a catch that is! Pratik Surve bowling from round the wicket and getting Ravi Chavan out on the very first delivery which he bowled from the other side. Absolutely brilliant catch that was. He might have hurt himself as well, but that's such an important wicket. Ravi Chavan, the captain, hit it really hard. What a catch by Pratik Surve. Ravi caught and bowled Pratik. And the first wicket for the Avengers is down. 32 for 1 they are now in the 4th over. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. That was a good cameo played by Ravi. 9 runs he scored of 10 deliveries. Stay tuned, we'll be back soon. Amol Saraf is a new batsman. He bowls with the left hand but bats with the right. Starts off well. That was a very important wicket, and that is what we were
mentioning, if a wicket or two falls, the chase becomes a totally different affair. Oh, and that's a wonderful delivery and some really good wicket keeping by the keeper as well. A single taken easily is off the mark. That's the end of the fourth over. A very good over by Pratik Surve. Just 5 of that over. And 33 for 1. Avengers are now, after the end of 4 overs, a wicket lost in the last over. Mulsaraf on strike. Faisal Khan coming into bowl his first over. Faisal to Amol. That's a wonderful start by Faisal. What a quick delivery that was to start his spell. He seems to be coming in really quickly, steaming in. Genuine pace bowler, tall guy, Faisal Khan. That was a wonderful start to his spell. The ball almost hit the bat instead of the bat hitting the ball. Oh, and this time again a quick delivery. He is very quick, without doubt. That's a very good run taken by both these players. Let's have a look at the pace that he's bowling with, Faisal Khan. Not at all easy for any batsman to negotiate at that pace. They got a wonderful team, Accenture. This is going to be a very good match. May go down the wire as well. Both the teams have started well. Rohit Iyer on strike. He has been the aggressor. What a player we have seen in the Avengers. What shots has he played today? Absolutely stunning. Oh, and that's over. Oh, and that has been pulled towards the boundary. Is that a wide? That's a wide signal by the umpire. So 4 runs gifted there. For a moment it looked he had pulled it, Rohit, but that was a wide. So 5 runs now, along with the wide on that delivery. So whatever good work he had done in the first 2 deliveries, he just spoils that with a poor delivery on the leg side. And sometimes pace can make you get carried away, and probably the same thing happened with Faisal as well, coming back with his next delivery. Oh, what a shot that is! Absolutely stunning it. What a player this guy is. A big 6 straight down the ground, and take that, says Rohit Iyer. Faisal Khan being stunned in his first over. What a shot that is. This is, without the shadow of any doubt, the shot of the evening today. That was such a wonderful shot. Just went into the fence like a bullet. No chance for any fielder, all of them just spectators, and cleared the fence easily. Such was the power of his bottom hand, and look at the timing as well. Absolutely stunning batting by Rohit Iyer. He's 28 of just 11 deliveries. He's having a party of his own on this pitch today, in this ground. Oh, and this time the inside edge.
Almost got his wicket there, Fazal. Good comeback by him. What a shot that was. Already 12 of that over. They've started off so well. So a good score that they have to chase. 162, and they're 45 for 1 already the 5th over. Absolutely stunning batting by Rohit Iyer till now. Trying to hit the big shot again. Not succeeding. This is a good delivery. Outside the off stump, and he extracted some bounce as well. He's a tall guy. We've already seen that. This time bending his back, utilizing the force of his shoulders as well. Wonderful piece of bowling there by Fazal. Some really high quality cricket being displayed by both these teams. What a shot that is, in the air, and it's a boundary this time. Stunning batting that by Rohit Iyer. Fazal Khan really expensive in his first over. He went for 16 in his first over and 49 for 1 after 5 overs. So 5 overs, 49 for 1, and allow us to switch to the Hindi commentary now for the next 5 overs. एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हिंदी कमेंट्री के साथ। जय पांड्या आए हैं अपना पहला ओवर डालने। नए गेंदबाज और अमोल सराफ स्ट्राइक पर हैं, और अमोल ने बहुत बेहतरीन तरीके से कलात्मक अंदाज में उसे कलाइयों के प्रयोग से खेल दिया। स्क्वायर लेग की तरफ 1 रन ले लिया। बैकवर्ड स्क्वायर लेग का अच्छा क्षेत्र रक्षण, लेकिन रन रोक नहीं पाए। और 50 रन पूरे एवेंजर्स के। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की है। 10 रन प्रति ओवर के आसपास का रन रेट बना के रखा हुआ है। 9.68। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी, और इस बल्लेबाज के क्या ही कहने। रोहित अय्यर 32 रन 14 गेंदों पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा दिखाया है। अद्भुत शॉट्स इनके बल्ले से निकले हैं आज। वो छक्का तो अकल्पनीय था, अविश्वसनीय। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी। क्या जबरदस्त छक्का लगाया पिछले ओवर में। गेंदबाज के सर के ऊपर से 6 रन। बेहतरीन शॉट रोहित के द्वारा, और एक डॉट बॉल खेली इन्होंने इस बार। और ये बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। बेहतरीन गेंदबाजी जय पांड्या की। यहां लालच दे रहे हैं बड़े शॉटों का। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी है जय पांड्या की। तेज गेंदबाज हैं, लेकिन थोड़ी सी धीमे डाल रहे हैं गेंदें और लालच दे रहे हैं बड़े शॉट्स का। रोहित अय्यर फंस गए थे इस बार। एक और हल्की गेंद। बहुत बेहतरीन ये सोच। तेज दिमाग के गेंदबाज जय पांड्या। बढ़िया शुरुआत उनकी इस ओवर में। रोहित ने 1 रन लिया लॉन्ग ऑन की तरफ खेलकर। अमोल वापस स्ट्राइक पर, और ऐसी शुरुआत अगर मिल जाए तो 162 क्या 200 रन का लक्ष्य भी पार किया जा सकता है। बेहतरीन बल्लेबाजी, और ये भी डब्ल्यू की अपील कर रहे हैं, लेकिन इम्पैक्ट तो भारी होगा। शायद बल्ला ही लगा है, पैड तो लगा भी नहीं था। तो बहुत बेहतरीन निर्णय यहाँ पर। उच्च स्तरीय अंपायरिंग हो रही है दोनों अंपायरों के द्वारा। अमोल सराफ को इस समय सिर्फ 1-1 रन लेकर स्ट्राइक बदलनी चाहिए।
ये उनकी रणनीति होनी चाहिए, लेकिन ये खराब अगर गेंद मिलेगी तो वो भी मारेंगे। बेहतरीन शॉट, ये 4 रन होना चाहिए। जी हाँ, डीप मिड विकेट पर कोई भी क्षेत्र रक्षण करने के लिए क्षेत्र रक्षक मौजूद नहीं और ये 4 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर अमोल सराफ की और उनकी पहली ये बाउंड्री सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। और जय ने इतना बढ़िया ओवर कराया था अभी तक, लेकिन आखिरी गेंद पर चूक गए वो, छोटी गेंद, और अमोल ने सीमा रेखा के पार भेजा 4 रन लेते हुए। 6 ओवरों के बाद स्कोर है 55 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बेहतरीन पावर प्ले खेला है एवेंजर्स ने। 7वां ओवर शुरू होता हुआ और ये स्टंप आउट यहां पर होते होते बच गए। क्या बेहतरीन स्टंपिंग यहां पर विकेट कीपर की, और दर्शन आए गेंदबाजी करने। जबरदस्त शुरुआत, बेहतरीन लेग स्पिन गेंदबाजी से शुरुआत यहां पर, और क्या फिरकी डाली थी इन्होंने, पूरी तरह से चकमा खा गए थे रोहित अय्यर। बच गए यहां पर, भाग्यशाली की क्रीज के बाहर नहीं थे। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, ये देखिए शेन वॉर्न की तरह गेंदबाजी डाल रहे हैं। जी हाँ, महान गेंदबाज शेन वॉर्न, जिनकी इस साल अकस्मात मृत्यु हो गई, लेकिन आप दर्शन को देख के उन्हें एक बार याद तो जरूर करेंगे। क्या बेहतरीन इनकी लेग स्पिन गेंदबाजी, और इनका आप अगर रनअप और एक्शन देखेंगे बिल्कुल शेन वॉर्न लगता है, फॉलो करते हैं। ये देखिए उसी तरह का रनअप, और ये देखिए बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाज भी हैं, और मानना पड़ेगा दर्शन की जितनी तारीफ की जाए कम है। ना ही सिर्फ शेन वॉर्न की तरह एक्शन और रनअप है, लेकिन गेंदबाजी भी उसी दर्जे की डालने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं। उंगलियों का बेहतरीन यहां पर प्रयोग करते हुए देखिए क्या बेहतरीन गेंदबाजी और बढ़िया शॉट रोहित का। उन्होंने आखिरकार आंक लिया उनकी खतरनाक गेंदबाजी को और 1 रन ले लिया स्वीपर कवर की तरफ। 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन, क्या बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है दर्शन के द्वारा। और इस तरह का गेंदबाज अगर आपके दल में हो तो मनोबल बहुत बढ़ जाता है। बहुत जबरदस्त फिरकी गेंदबाजी डाल रहे हैं। दूसरी तरफ अमोल सराफ बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो खुद ही एक फिरकी गेंदबाज हैं। और ये बेहतरीन शॉट, फुल टॉस गेंद और उसे पहुंचा दिया सीमा रेखा के पार 6 रन के लिए। जी नहीं, चौका है। 4 रन मिला वहां पर, ऐसा लगा था कि 6 भी हो सकता है, लेकिन बेहतरीन शॉट था ये। वहां पर कोई क्षेत्र रक्षक भी नहीं रखा था, तो फुल टॉस गेंद को अमोल ने पहुंचाया सीमा रेखा के पार। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं अमोल सराफ भी, अब पूरा साथ निभाते हुए यहां पर रोहित का। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पहले ही कर चुके हैं। 60 रन का स्कोर हो गया है, सिर्फ 102 रन चाहिए अब इस मैच को कब्जे में करने के लिए। इस बार चूक गए दर्शन, शायद हमने ज़्यादा ही तारीफ कर दी थी उनकी। फुल टॉस डाल दी उन्होंने। अब देखते हैं ये गेंद कैसी होगी। बहुत बेहतरीन, जी हाँ, और यही इनका ज़बरदस्त स्तर है। और ये ओवर की समाप्ति, 5 रन दिए इस ओवर में उन्होंने। 7 ओवर के बाद स्कोर है 60, 1 विकेट के नुकसान पर। छोटा सा विराम लेंगे और वापस आएंगे आपके पास। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।
जय पांड्या आ गए अपना दूसरा ओवर लेकर। स्ट्राइक पर रोहित, बढ़िया शॉट, एक भी रन नहीं लेकिन सीधे एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र रक्षक के हाथ में। चौंतीस गेंदों पर आ गए, सिर्फ 34 रन पर आ गए सिर्फ 21 गेंदों के बाद। रोहित ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नज़ारा दिखाया है आज, बेहतरीन गेंदबाजी। जय के जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और इनका जो रन अप है और इस तरह की गेंदबाजी ये कर रहे हैं, क्रिस हैरिस की याद दिला रहे हैं। न्यूजीलैंड के घातक गेंदबाज और ऑलराउंडर थे क्रिस हैरिस। जय पांड्या की भी गेंदबाजी बहुत ज़्यादा उनसे मिलती है। ये देखिए पीछे से लाते हैं और ये क्या गेंदबाजी है, वाह। तारीफ करनी होगी जय पांड्या की, जेपी के नाम से प्रसिद्ध हैं अपने दल में। बेहतरीन गेंदबाजी और रोहित के पास कोई जवाब नहीं इस तरह की गेंदबाजी का। लगता है पर दबाव में आ गए हैं रोहित, कितनी ताबड़तोड़ बैटिंग पहले ही कर चुके हैं, उन्हें तो दबाव में आने की कोई यहाँ ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ही तो सबको दबाव में यहाँ पर ला के खड़ा किया है। सारे गेंदबाज जो हैं वो धराशायी किया उन्होंने पहले कुछ ओवरों में, लेकिन पिछले 2-3 ओवरों में शॉट्स उतने अच्छे उनके लग नहीं रहे हैं। और इस बार फिर से पॉइंट के क्षेत्र रक्षक के हाथ में एक भी रन नहीं, सीधे शॉट खेला उन्होंने। 4 गेंदों में 4 डॉट गेंदें, क्या बात है। जय पांड्या की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास इस बार, और क्या ये बड़ा शॉट है और ये आउट। जय पांड्या ने यहां पर चलता किया है रोहित अय्यर को, और यहां पर बहुत ज्यादा तारीफ के पात्र हैं जय पांड्या, बेहतरीन गेंदबाज। और हम उनकी तुलना क्रिस हैरिस से ऐसे ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने आखिरकार एक बहुत बड़ा विकेट चटका दिया है। दूसरा विकेट गिरता हुआ यहां पर रोहित अय्यर क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर आउट हुए हैं। लेकिन जय पांड्या की वजह से खेमे में जबरदस्त एक उत्साह आ गया है एक्सेंचर के। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, 34 रन। और जी हाँ, हम दबाव की बात कर रहे थे रोहित के ऊपर, और शायद उसी दबाव के कारण रन नहीं आ रहे थे बल्ले से उनके पिछले कुछ गेंदों में, पिछले 2-3 ओवरों में। और आखिरकार बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे। 60 पर 2। जय पांड्या ने इस ओवर में एक भी रन नहीं दिया और विकेट ले लिया, तो मेड इन विकेट भी डाल सकते हैं। ये खतरनाक गेंदबाजी है, घातक गेंदबाजी, और क्या ज़बरदस्त तरीके से लालच देते हैं। पिछले ओवर में भी हम देख रहे थे लालच दे रहे थे बड़े शॉट्स का, और आखिरकार चकमा खा गए। नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर आएंगे। दीप अजमेरा है नए बल्लेबाज, दाएं हत्था बल्लेबाज। जय पांड्या का दूसरा ओवर, उनका पहला विकेट। और ये मेडन विकेट, क्या बेहतरीन ओवर, एक भी रन नहीं दिया। 8 ओवर के बाद 60 पर 2, 7.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं एवेंजर्स। और ये बहुत ही बढ़िया ओवर जय पांड्या का। यहाँ T20 में मेडन ओवर डालना बहुत ही बड़ा एक कारनामा होता है। और वो भी विकेट के साथ डालना तो बहुत ही जबरदस्त प्रयास। दर्शन आए अपना दूसरा ओवर लेकर। उनकी तुलना हमने महान गेंदबाज शेन वॉर्न से की है, जिन्हें विजर्ड ऑफ स्पिन कहा जाता है। उनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी है, हालांकि इनका जो एक्शन और
रन अप है वो तो पूरा ही शेन वॉर्न से लगता है फॉलो करके इन्होंने ऐसा ही कर दिया। ये देखिए बेहतरीन, हालांकि फुल टॉस डाल देते हैं कभी कभी और इस बार भी फुल टॉस था। अमोल ने अच्छा शॉट खेला, 1 रन लॉन्ग ऑन की दिशा में लिया। जी हाँ, विज़र्ड ऑफ स्पिन ऐसे नहीं कहते थे शेन वॉर्न को, जादूगर थे वो। गेंद उनके हाथ में आती थी तो ऐसा जादू करते थे कि बड़े बड़े दिग्गज चकमा खा जाते थे, धूल चटा जाते थे बल्लेबाजों को। दर्शन की अगली गेंद, दीप अजमेरा 1 गेंद खेल चुके हैं, अभी तक खाता नहीं खोला है। बेहतरीन शॉट, ये बढ़िया शॉट स्वीपर कवर की तरफ, 1 ही रन मिलेगा लेकिन अच्छा शॉट खेलकर अपना खाता खोला दीप ने। ये 9वां ओवर चल रहा है इस दूसरी इनिंग्स का, दूसरी पारी। 162 चाहिए जीतने के लिए। बेहतरीन गेंदबाजी और ये हवा में खेला हुआ शॉट, लेकिन 1 रन मिल जाएगा। बहुत बढ़िया गेंदबाजी दर्शन के द्वारा। यहां पर इनका दूसरा ही ओवर है ये, लेकिन उनकी खास बात यह है कि गेंद को आगे डालने से नहीं डरते हैं। अभी तक इन्होंने सिर्फ 1 ही छोटी गेंद डाली है, अपने दूसरे ओवर में है ये भी, लेकिन गेंद को आगे डालना इनको बहुत ज़्यादा फायदा भी देता है और बहुत ही तेज दिमाग के धनी है कि गेंदबाजी देखकर पता चल रहा है। बढ़िया शॉट ये, लेकिन क्या ये सीधे हाथ में होगा? जी नहीं, ये बेहतरीन क्षेत्ररक्षण है यहां पर। हालांकि रन सिर्फ 1 ही मिला। शॉट बहुत बढ़िया था लेकिन दीप अजमेरा के द्वारा। अमोल वापस स्ट्राइक पर। अमोल के ऊपर बहुत दारोमदार है, अनुभवी खिलाड़ी। देखते हैं किस तरह आगे खेलते हैं, ले जाते हैं अपनी पारी को। बेहतरीन शॉट, क्या ये चौका है? जी हां, ये 4 रन है। क्या शॉट है, बहुत ही बेहतरीन प्रयास वहां पर, जबरदस्त क्षेत्ररक्षण, लेकिन चौका नहीं रोक पाए। जैसा कि हमने अभी बोला कि अमोल के ऊपर बहुत दारोमदार है इस मैच में, और अच्छी गेंद को भी उन्होंने चौके में परिवर्तित कर दिया। अमोल सराफ 17 पर आ गए हैं। बहुत बढ़िया वापसी है और ओवर की समाप्ति डॉट से। 9 ओवर के बाद स्कोर 68 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में 8 रन बने। छोटा सा ब्रेक लेकर वापस जुड़ेंगे आप सभी के साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय पांड्या अपने अगले ओवर के साथ, और बेहतरीन शॉट, ये 4 रन होना चाहिए। जी हां, दीप अजमेरा का बेहतरीन शॉट, छोटी गेंद और लेग साइड की तरफ भी जा रही थी ये, और उसे सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया 4 रन के लिए। सिर्फ 2 टप्पा खाकर चौके की तरफ ये गेंद अग्रसर हुई। जबरदस्त प्रहार 4 रन के लिए। खराब गेंद थी, लचर गेंदबाजी इस बार जय पांड्या की। खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे अभी तक, लेकिन पहली गेंद उन्होंने जो अभी तक
अच्छी नहीं डाली है। पिछला ओवर तो मेडन डाला था, तो उसके बाद चौका जाना तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात हो गई यहां पर। और ये फुल टॉस गेंद, क्या ये नो बॉल है? और ये खराब क्षेत्ररक्षण, 2 रन आराम से ले लिए। लॉन्ग ऑफ का यहां पर खराब क्षेत्ररक्षण और 2 रन मिल गए आराम से दीप अजमेरा को। 74 रन स्कोर हो गया है। तेजी से ये लोग दोनों बल्लेबाज अपना स्कोर बढ़ा रहे हैं आगे और अच्छी एक साझेदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी, अच्छी गेंद जय पांड्या की। वापस आ गए अपने असली अवतार में। जिस तरह की बेहतरीन गेंदबाजी डाल रहे थे। और जी हाँ, इनका अगर आप सही से रन अप और ये देखेंगे तो क्रिस हैरिस से बहुत मिलता जुलता है। एक्शन भी बहुत ज़्यादा वैसा ही है कुछ। अगली गेंद, बढ़िया शॉट, हवा में खेला हुआ शॉट, बेहतरीन ये बल्लेबाजी और ये उतनी अच्छी फील्डिंग, क्षेत्ररक्षण बहुत ही अच्छा और 2 रन ले लिया आराम से। और ये इस बार लगता है पैड को लग कर गई है गेंद। 1 रन और लेग बाय का इशारा अंपायर के द्वारा। जी हाँ, पैड को लगी थी, साफ दिख रहा था। सतहत्तर पर 2 हो गया स्कोर। सिर्फ 85 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्कोर का पीछा किया है अभी तक। अच्छी गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंद। और ये ओवर की समाप्ति, हालांकि 9 रन मिल गए इस ओवर में। जय पांड्या के ओवर में 9 रन मिलना बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। 10 ओवरों के बाद स्कोर है 77 पर 2 और ड्रिंक्स बुलाए गए हैं खिलाड़ियों के जलपान हेतु। थोड़ा सा विराम लिया जाएगा अब और हम एक छोटे से विराम के बाद वापस आपसे जुड़ेंगे। आखिरी 10 ओवर बचे हैं इस मैच में और हम एक छोटा सा विराम लेकर जल्दी ही आते हैं। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।
ड्रिंक्स ब्रेक के बाद वापस आपके साथ जुड़ते हैं। 10 ओवर 77 पे 2। लियोन फर्नांडिस आए हैं, नए गेंदबाज, बाएं हथा गेंदबाज। अब देखना है कि किस तरह उन्हें खेलते हैं। और ये बच गए पहली गेंद पर। दीप अजमेरा, शायद हल्की सी चोट भी लगी है। अच्छी गेंदबाजी यहां पर लियोन की। पुल करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन शॉट नहीं लगा पाए दीप। लियोन की अगली गेंद, बढ़िया शॉट, 1 रन मिलेगा। क्या दूसरे के लिए आना चाहेंगे, देखना है अब। नहीं, एक ही लिया इन्होंने। लियोन की अगली गेंद, अमोल स्ट्राइक पर है। अच्छी गेंदबाजी और ये वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। अतिरिक्त रन यहां पर दे दिया लियोन ने एक। बाएं हथा गेंदबाज होने का एक अलग ही फायदा होता है। अगर वो फिर की गेंदबाज हो तो लियोन अगर यहां पर 1-2 विकेट चटका दिए तो मैच बहुत ही ज्यादा यहां पर। और एक और वाइड, खराब गेंदबाजी लियोन की। आर्म बॉल डालना चाह रहे थे, हालांकि चूक गए। जी हाँ, 1-2 विकेट यहां पर गिर गए तो मैच बहुत ही रोचक हो जाएगा। हालांकि 80 रन बन चुके हैं, सिर्फ 82 चाहिए 58 गेंदों पर। बहुत ही बेहतरीन यहां पर पीछा किया रनों का। और ये एज, लेकिन एक भी रन नहीं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी लियोन के द्वारा। 2 वाइड उन्होंने डाल दी थी, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी। 3 गेंदों पर 3 रन। और ये वाइड होना चाहिए। जी हाँ, खराब गेंदबाजी, अच्छी डाल रहे हैं, खराब डाल रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है। थोड़ा सा इन्हें अपनी लाइन में सुधार करना होगा। बढ़िया गेंदबाजी और अच्छा शॉट, एक भी रन नहीं हालांकि। तो जो संगतता चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, वो नहीं हो पाई है अभी तक इस ओवर में। और ये संगतता बहुत ही आवश्यक। कंसिस्टेंसी के बिना, संगतता के बिना कोई भी गेंदबाज मनचाही गेंदबाजी नहीं कर सकता है। और वाइड डाल देते हैं या नो बॉल डाल देते हैं तो आपको फिर से सोचना पड़ता है कि अगली गेंद कैसे डाले। बढ़िया शॉट, इस बार 1 रन होना चाहिए। जी हाँ, आराम से लिया अमोल ने। दीप आ गए हैं वापस स्ट्राइक पर। दोनों ही बल्लेबाज बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। दीप अजमेरा 10 गेंदों पर और अमोल सराफ 18 गेंदों पर। अमोल की आखिरी गेंद ये, इनका पहला ओवर है ये। देखना है कि आखिरी गेंद पर कोई बड़ा शॉट मारने का प्रयास करेंगे क्या दीप अजमेरा। बढ़िया शॉट, 1 ही रन मिलेगा हालांकि। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र रक्षक ने बढ़िया क्षेत्र रक्षण दिखाया। ओवर की समाप्ति यहां पर 11 ओवर के बाद 83 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एवेंजर्स बढ़िया तरीके से, बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ते हुए स्कोर का पीछा करने के लिए इस तरह की शैली अपनानी चाहिए, उसी शैली से खेल रहे हैं। आप देखिए रन रेट 7.55 का है और रिक्वायर्ड रन रेट जो है, जो ज़रूरत है, आवश्यक रन रेट 8.78 का। तो
लगभग उसी रन रेट से खेल रहे हैं और बाद में तो 5 ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती है T20 क्रिकेट में, तो बहुत बेहतरीन ये रणनीति। और ये खराब क्षेत्र रक्षण, 1 रन दे दिया आसानी से। और ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से भागे हैं दोनों बल्लेबाज। सुरेश आए हैं अपना पहला ओवर डालने, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी है लेकिन अच्छी गेंदबाजी भी है। एक भी रन नहीं इस बार, डॉट गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। दीप अजमेरा बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, सक्षम हैं एक बल्लेबाज के तौर पर अपने मन मुताबिक बड़े शॉट खेलने में। अच्छी गेंदबाजी और बढ़िया तरीके से इसे खेला और 1 रन ही होना चाहिए। जी हाँ, 1 ही हुआ। बेहतरीन यहाँ पर क्षेत्र रक्षण डीप मिड विकेट के क्षेत्र रक्षक द्वारा अंदर भाग के आए और सिर्फ 1 ही रन दिया। और अगली गेंद लेकर आ रहे हैं सुरेश कुंचिकोर भी, और ये हवा में खेला हुआ शॉट। अमोल सराफ बेहतरीन बल्लेबाज हैं, 1 ही रन मिलेगा हालांकि। बढ़िया शॉट, 1 रन, 1 रन करके ही ऐसे रन गति को जारी रखना होगा। 88 पर 2 है स्कोर 12 ओवर के बाद। सुरेश का बढ़िया ओवर, 5 रन दिए सिर्फ अपने पहले ओवर में। लियोन अपने अगले ओवर को लेकर आते हुए, और ये भारी किनारा, और ये 4 होना चाहिए। जी हाँ, बेहतरीन यहां पर प्रयास, लेकिन चौका नहीं रोक पाए और 4 रन। ये देखिए कितना महत्वपूर्ण चौका था ये दीप अजमेरा के द्वारा। लियोन की पहली गेंद पर ही चौका ले लिया। बेहतरीन शॉट, और क्या ये चौका होगा? जी नहीं, बहुत ही बेहतरीन यहां पर क्षेत्र रक्षण डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र रक्षक द्वारा। 1 ही रन मिला लेकिन बहुत बढ़िया शॉट था। और इस बार वाइड होना चाहिए, ये ऑफ स्टंप के बहुत बाहर, और ये वाइड गेंद और 1 रन भी लिया तो 2 रन मिल गए यहां पर। खराब गेंदबाजी कहेंगे इसको।
अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन वापसी, एक वाइड डालने के बाद डॉट गेंद। फुल टॉस गेंद और ये एक ही रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए आ रहे हैं। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स, यहां पर खराब क्षेत्र रक्षण, लचर यहां पर क्षेत्र रक्षण लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र रक्षक द्वारा। बेहतरीन शॉट, इस बार 2 रन के लिए फिर जाना चाहेंगे लेकिन एक ही रन मिलेगा। अच्छा क्षेत्र रक्षण इस बार और ये ओवर की समाप्ति होने में एक गेंद बची है। बेहतरीन शॉट, एक ही रन मिलेगा। हालांकि अमोल सराफ बल्लेबाजी बहुत बढ़िया कर रहे हैं और दीप अजमेरा भी बेहतरीन साथ दे रहे हैं। अमोल सराफ 21 गेंदों पर और दीप को देखिए 23 रन 20 गेंदों पर। ओवर की समाप्ति यहाँ पर 13 ओवर के बाद 99 रन 2 विकेट के नुकसान पर। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है। 7 ओवर में अभिनय चाहिए 63 रन इस मैच को जीतने के लिए। 9 रन प्रति ओवर और आपके पास विकेट्स हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुरेश आ रहे हैं अपना अगला ओवर लेकर। बहुत बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखने को मिल रही है। क्रिकेट ने चरम पर है यहाँ पर। बहुत ही उच्च स्तरीय मैच हो रहा है द सुपर लीग TSL में। और ये तेजी से एक रन लेने के प्रयास लेकिन वापस भेजा। सुरेश की बेहतरीन गेंदबाजी है ये। अमोल स्ट्राइक पर, बड़े शॉट्स खेलने पड़ेंगे एक दो अब यहाँ पर। हालांकि रन रेट अभी भी काबू से बाहर नहीं गया है। क्या शॉट लगाया है और ये 6 रन, वाह। चौका है माफ कीजिएगा लेकिन क्या बल्लेबाजी कर रहा है अमोल सराफ। तारीफ करनी होगी अमोल सराफ की। और ये 100 रन पूरे इस शॉट के साथ एवेंजर्स के। क्या शॉट था ये, आगे बढ़कर लिया सुरेश ने। यहाँ फुल टॉस गेंद दी और उसका भरपूर फायदा उठाया। सतीश की अगली गेंद, पिछली गेंद पर 1 रन और ये बेहतरीन गेंदबाजी। दीप अजमेरा ड्राइव करना चाह रहे थे। बेहतरीन गेंदबाजी थी यहाँ पर सुरेश की, माफ कीजिएगा।
और ये बेहतरीन शॉट, क्या ये चौका होगा? जी नहीं, 2 रन के लिए आना चाहेंगे और ले भी लेंगे आराम से। बढ़िया बल्लेबाजी है। दीप अजमेरा क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, वाह। अनुभवी युवा खिलाड़ी, जबरदस्त बल्लेबाज। और सुरेश के इस ओवर में 7 रन आ चुके हैं 5 गेंदों पर। चौका लगाया था अमोल सराफ ने डाउन द ट्रैक जाके आगे बढ़कर। बढ़िया गेंदबाजी और ये हवा में गेंद, बच गए यहां पर। भाग्यशाली हैं, अच्छी गेंदबाजी थी ये। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर से बहुत ज्यादा घूमी गेंद। दीप यहां पर छक्का खा गए थे, लेकिन 1 रन फिर भी मिल गया। 14 ओवर के बाद स्कोर है 107 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवरों में अब 55 रन की आवश्यकता। 9 रन प्रति ओवर ही चाहिए इन्हें, बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं है ये। अगर विकेट इनके हाथ में रहते हैं तो ये स्कोर शायद बन जाएगा एवेंजर्स से। अभी जो माहौल है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, ये हम सबको पता है। अब आ गए दर्शन अपना अगला ओवर लेके। दर्शन की पहली गेंद उनके अगले ओवर की, तीसरा ओवर इनका ये। बढ़िया शॉट यहाँ पर, क्या 2 रन के लिए आना चाहेंगे? जी हाँ, और आ भी जाएंगे। जी नहीं, अमोल ने वापस भेजा और ये सही निर्णय है क्योंकि वो फिसल गए थे। दीप ने वापस भेजा अमोल को। और ये बेहतरीन स्टंपिंग और ये आउट। अमोल सराफ बड़ा 1 विकेट यहां पर लेते हुए दर्शन। क्या जबरदस्त गेंदबाजी दर्शन के द्वारा और बहुत बेहतरीन स्टंपिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट गिरा है और बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर गिरा है इस मैच के। 108 पर 3, 14.2 ओवरों में एवेंजर्स। और एक छोटा सा विराम लेते हुए वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी दर्शन के द्वारा। दर्शन की अगली गेंद और ये क्या बेहतरीन गेंदबाजी है, वाह। लेकिन यहां पर ये इनकी खराब किस्मत ही कह सकते हैं कि चौका मिल गया है यहां पर बल्लेबाज को। राम माने आए नए बल्लेबाज और क्या गेंद थी। और ऐसे ही हम इनको शेनवॉन से नहीं कंपेयर कर रहे थे, इनकी तुलना शेनवॉन से इसलिए करते, बहुत ही बेहतरीन गेंद थी ये, मानना पड़ेगा। राम माने ने आते ही न खाता एक चौके से खोला, थर्ड मैन की दिशा में जो एज लेकर गया। लेकिन नए बल्लेबाज के सामने इन्होंने स्लिप क्यों नहीं ली, मुझे अभी समझ में नहीं आया। और अभी भी नहीं ले रहे हैं। इतनी बढ़िया गेंदबाजी करने तो स्लिप तो लेनी चाहिए इन्हें। ये 15वां ओवर इस मैच का, इस पारी का माफ़ कीजिएगा। और दूसरी पारी चल रही है 112 पर 3, सिर्फ 50 रनों की आवश्यकता अब 33 गेंदों पर।
बेहतरीन गेंदबाजी एक बार फिर से, तेजी से रन लेने की कोशिश और ले भी लिया रामा ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। स्ट्राइक पर दीप अजमेरा, इनके ऊपर बहुत ज्यादा अभी जिम्मेदारी है। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की इन्होंने अभी तक दीप ने। छोटी गेंद, बढ़िया शॉट। क्या यहां पर 2 के लिए आना चाहेंगे? जी हाँ, बहुत बेहतरीन यहां पर क्षेत्र रक्षण किया है, लेकिन 2 के लिए क्या एक ही सही से हो जाए? इतने अच्छे क्षेत्र रक्षण पर बल्लेबाज उसी से संतुष्ट हो जाएंगे। और बहुत ही बेहतरीन है गेंदबाजी दर्शन के द्वारा। 15वां ओवर चल रहा है, 114 पर 3। इस ओवर की आखिरी गेंद, बढ़िया शॉट, लॉन्ग ऑन की दिशा में। एक ही रन से दूसरे रन के लिए आना चाह रहे थे, लेकिन बढ़िया यहां पर क्षेत्र रक्षण। और ये ओवर की समाप्ति। 15 ओवर के बाद स्कोर है 115 पर 3। और अब हमें आज्ञा दीजिए कि हम अंग्रेजी कमेंट्री की तरफ अगले 5 ओवरों के लिए और मैच के अंत तक आपके साथ वापस जुड़े। एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर से जुड़ेंगे आपके साथ अंग्रेजी कमेंट्री के साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। प्रतीक सुरवे आए हैं अपना अगला ओवर लेकर, और अब हम अंग्रेजी कमेंट्री की तरफ अग्रसर करेंगे। And you're back with the English commentary. Pratik Surve starting off his 3rd over. That's a single taken on the first delivery, and Deep Ajmera on strike. Ram Mane is doing a fabulous job. 7 of just 4 deliveries. And Deep has a lot of work to do if he wants his team to win this match. Almost 10 runs in the over required now, 9.5 to be precise. The current run rate is really healthy, 7.65. But then, oh, and this should be a big shot. And that's a huge 6. Wow. It's a wonderful shot for a 6. The deep mid wicket. Just a spectator there. What a shot that was. The batsman probably expecting a no ball there, but the umpire saying that already he's out of his crease, so maybe that's the reason why a no ball was not given. And Pratik being hit for a huge 6. Another good shot this time. Just a single towards the cover region. So 8 already of this over. This is the 16th over. 123 for 3. Just 39 required now to win. 27 deliveries. So this is wonderful piece of batting. Oh, Ram Mane this time planning to play the big shot. And he's dropped him. He has dropped a sitter there. Would you believe that? And has he dropped the match? This is absolutely
sloppy work there. He won't be happy with himself. And a single taken as well, so nothing going right for the Accenture team. That was an easy catch, should have been taken. That's well played again. And a quick single taken. This is really good stuff by both these batsmen. That was a sitter by all means and should have been taken. This could be a very, very expensive drop. We'll have to see how things unfold in the next few overs. It was Rahmani who was dropped on 7. Oh, and this time a wonderful piece of bowling to end the over. So 125 for 3 after 16. Last 4 overs remaining, the death overs in the second innings remaining, and they need 37 to win in 4 overs. So the run rate still above 7.5 runs, but the required has come down to 9 now. Is definitely achievable. Darshan coming into bowl his last over of his spell. He's been absolutely brilliant with his leg spin bowling. Almost a replica of Shane Warne. Not only with the action and the run-up, but also with the finger spin. Bowls in the right areas and has been brilliant today with his leg spin. Oh, and in the air this time. Will that be caught? And he's taken it. What a catch that is. And Darshan has struck again. And probably the most important wicket in this match. Deep Ajmera was playing so well. He tried to sweep Darshan, but a very good catch taken by the wicketkeeper. And this is an important breakthrough in the context of this match. Absolutely stunning piece of work there by Darshan. And all praises for Darshan here. This is the 3rd wicket. His 2nd wicket, I beg your pardon. And the 4th wicket down for Avengers. Absolutely brilliant bowling that is, and 125 for 4 is the score after 16.1 overs. And we'll take a quick commercial break. We'll be back soon. Stay tuned, viewers. Darshan. Absolutely stunning piece of bowling that by Darshan. Narshad Patkar is the new batsman. So it's really good
bowling by Darshan. And is he a clone of Shane Warne, bowling all the deliveries very similar? Oh, and what a ball that is! That's a peach of a delivery, and stunning work there by Darshan there. Pitched on the leg stump and spun brilliantly, and this time a good shot by Harshad Patkar. He opens his account. Oh, and he almost missed it. The fielder does well eventually, and that's the end of probably one delivery remaining or a couple remaining. We'll have to just check with the scorer. So Harshad opens his account on the third delivery of his innings. Ram on strike. And Darshan trying to bowl the quicker one. Ram playing it really well towards the deep mid wicket, just a single this time. Harshad on strike, and Harshad has the ability to hit big shots. They should be a bit patient here. Should not be trying to hit every ball for a big shot. 35 required from the last 19 deliveries in this match, and 35 on 19 is absolutely achievable with players like Harshad Patkar and Ram Mane at the crease. It's not something which is out of the reach of the Avengers. However, Darshan, all praises for this guy. Indian version of Shane Warne. Just have a look. Another good shot, just a single this time. The long off does well. That's the end of the 17th over. 128 for 4. 34 required of the last 3 overs. 11.33 runs per over is the ask. And the current run rate has come down to 7.53 after that wicket. So some big shots needed. Both these players really capable, and Darshan had finished a wonderful spell. And Jfsc Tsl coming into bowl his third over. Darshan bowling a wonderful spelling, taking 2 absolutely crucial wickets, including that of Deep Ajmera. Last 3 overs in this match remaining. Jfsc Tsl coming into bowl his next over. This is his third. On strike is Harshad Patkar. He'll have to see if he could hit some lusty blows in this over. Jfsc had gone for a lot of runs in his previous over. That's a wonderful shot by Harshad. Just a single this time, trying to come back for the second, but sent back. The right call there by Ram Mane. Jfsc starts off well, bowling it in the right channel, just outside the off stump. Harshad playing it well as well, but singles won't help them quite a lot. They will have to hit at least a couple of big shots in this over. This is a very crucial over in the context of this game. If they could make another 12-15 runs in this over, they could be well in control in the last 2 overs. Otherwise, it will be really tough for them to hit lusty blows in the last 2 overs, because the pressure would be really high. Jfsc with his next. Oh, and he's got him! He has bowled him! Absolutely stunning piece of bowling by Jfsc Tsl, and that is what we were discussing, mentioning. They need to hit some big shots, but Ram Mane just missing it completely there. And that's the end of another batsman. And Ram Mane getting out to a wonderful piece of bowling by Jfsc Tsl. He's going back to the pavilion. He played well for his 9. Took 9 deliveries, but should have stayed there. And this is the 6th wicket down for the Avengers. Accenture coming back really strongly in this match. Jfsc Tsl
Getting his first wicket, and that too was a wonderful delivery. Oh, and that's a good ball again. A quick single taken this time, and that's a misfield. Will they try and come back for the second? No. Jfsc is the new batsman. Harshad on strike again. Jaraj has been brilliant in this over. Just 2 runs of the three deliveries that he's bowled. Last 15 deliveries in this match. The Avengers won 30 for 5. Just 32 needed to win this match in 15 balls. Still achievable. That's a good ball. Wonderful piece of bowling there. Jaraj has been patient. He has been accurate. He has been sensible in this over. Harshad will have to keep believing his abilities. He is a wonderful striker of the cricket ball. We have seen his heroics in the last season in the TSL. That's a good shot. Should just be a single. That's a wonderful piece of work there by the fielder. He has been brilliant today. The captain of the team, Deepak, doing so well at the long off region. Jaraj has given only 3 runs in this over. 5 deliveries he's already bowled. Just 1 remaining. This is a dream over by Jaraj. The last delivery of this over. This is the 18th. And he's got him! Absolutely stunning bowling this by Jairaj Bisht. And he has turned the game 180 degrees in favour of the Accenture. Kiran Shetty, the next batsman, who's going to go back to the pavilion. Absolutely stunning piece of bowling by Jairaj Bisht. Kiran trying to hit the big shot, just not succeeding. And Avengers are collapsing here. This is the 7th wicket that they've lost. Just 2 overs remaining. They still have to score 31 runs. So wonderful piece of bowling by Jairaj, and what a comeback by Accenture. They've taken 5 wickets in quick succession in the last few overs. Absolutely stunning piece of bowling by the Accenture bowlers. Faisal Khan coming into bowl his next over. Just 2 overs remaining and 31 required to win this match. Seems to be a lot in favour of the Accenture team now, but this is cricket, anything can happen. And what a shot that is. Equally good stop by the fielder there, Leon Fernandez. That's a dot delivery. That's a stunning piece of bowling there. Very quick ball that was. Harsha trying to hit the big shot, not succeeding at all. Faisal Khan is on fire. A very important over. He's taken the responsibility brilliantly.
Oh, and that's a wonderful shot. Should be a boundary. Is a boundary. What a shot that is. And is that a no ball? We'll have to see. It seems it's just a boundary. A wonderful shot by Harshad Patkar. And that was a no ball. That's a free hit. Faisal with his next delivery. Should be a wide. Oh, and this time it was a free hit. Why did he wait for that, Harshad? That was a blunder. In this circumstance, they still need 26 to win. This should have been hit by him. He thought it could be a wide, and probably that's the reason why he did not choose to hit it. But that turned out to be a dot delivery. Faisal bowling some really quick and pacey deliveries. Oh, and this time another good delivery. Harshad Patkar missing it completely. Last two deliveries remaining in this 19th over. A lot of runs required now, so it seems Accenture are well in control of this match. Harshad Patkar will have to play out of his skin to win this match for his team. Right now the situation doesn't look in his favour. This should be a wide. It is a wide. This is a good decision by the umpire. So 6 wides given in this over. If those 6 wides had not been given, this could have been a very, very successful over, especially in the context of the game. And he's trying to hit a big shot, but gets a thick edge. Should just be a single. It was really well stopped by the third man fielder. Just one delivery remaining in this 19th over. Just last 7 deliveries remaining in this match. Yogesh Prabhu is the new batsman. He's on strike now. Oh, and that's the end of a very good over. Only 7 of that. Faisal Khan finishes a wonderful over. The 19th over has been bowled. Just 6 deliveries remaining. And they need 24 to win in the last over. And Harshad Patkar will have to hit 4 sixes or 6 boundaries to win this match for Avengers, his team. But Jfsc Tsl will bowl so well. 2 wickets he's already got. He will have to have a cool and calm head over his shoulders now. Last 6 deliveries remaining. Avengers need to play a miraculous over here if they want to win this match, or even they're thinking of tying this match. Harshad Patkar 9 of 13. Oh, and this time trying to hit the big shot. And a couple taken there easily. Went to deep extra cover, and Harshad trying his level best to win this match for his team. 22 required of the last 5 deliveries. This has been a wonderful defense by the Accenture team. Last 5 deliveries remaining. Harshad Patkar is on strike. We'll have to see whether he'll be able to hit a big shot here. He is capable of that. Oh, and this time lovely bowling by Jfsc. Just a single. Probably he'll come back for the second. No, Yogesh
And that's it. Both are not ready for the second here. Just a single. 21 required of the last 4 deliveries. Jfsc Tsl is on fire. Jfsc has bowled 2 wonderful deliveries for just 3 runs. This is his last over and the last of the innings and the match as well. So Jfsc. Oh, and that's a poor delivery. That's a no ball. Is that a boundary? It is a boundary. This is absolutely poor stuff by Jfsc. This is such a strange game. Just 16 required now. So they have now got 8 runs of the first 2 deliveries, which was just 3 runs till the previous ball was bowled. Poor bowling by Jfsc all of a sudden. He lost control and a wide, a no ball going to the boundary. Oh, and what a shot that is! Is that a big one? That's a huge 6. Wow! Couldn't have been a better time to hit that shot. And just 10 needed now of the last 3 deliveries. Oh, this match is on. Yogesh Prabhu, what a shot that was. And Jfsc bished. Probably that wide that he bowled. No ball, I beg your pardon, on the last delivery. Was the biggest blunder of his entire spell today. What a shot by Yogesh Prabhu. Hitting it out of the ground. Just 10 required now of the 3 deliveries that are remaining. So, if he hits a big 6 again, they will require only 4 runs to win on the last 2 deliveries. This is the real test for Jfsc Tsl, who has been... Oh, and this time it's a boundary. Oh no, there is a fielder there. Wow. Even we were excited in the commentary box here. For a moment we thought it hit the right edge and it went to the right location, the right place in the ground, but there was a fielder. So this is good captaincy by Deepak, the captain of Accenture. He knows that the edge will flow off to the third man, Jfsc, to Harshat Patkar. Oh, and this time he's trying to hit the big shot. Is that a big shot? And that's a boundary. Wow. This match is still not over. Going down the wire, last delivery remaining, and what a shot that is. Just 5 remaining to win this match. They've already scored 19 of this over. They wanted to score 24 and still 1 delivery is remaining. So Jfsc Tsl, that one no ball that he bowled, is proving very costly to the entire Accenture team, and not at all an amusing performance by Jfsc in this last over. He's bowled so well in the previous overs. He took 2 wickets in his previous over, but this time he's failed miserably, it seems. And 1 big shot needed. Can Harshat Patkar do that? 5 required to win off the last delivery. Oh, and that's a good delivery. Trying to come back for the second. Yogesh says no, and there was no. Finally they have won the match here. Avengers falling really short. They almost got there. And they've fallen really short by just a whisker. Lost the match by just 3 runs. And what a chase by Harshad and Yogesh. Jfsc Tsl, he would be a relieved man. 20 of that over. They wanted to score 24. The final score for Avengers is 158 for 6 after 20 overs, and just a 3-run victory to the Accenture over the Avengers. So what a match we've had in the TSL today, the Super League. And this is your commentator Shalin Gupta signing off and thanking all our viewers for watching this wonderful match till the end. And we'll be back with another match TSL very soon. Till then, please take care, have a good time and good night. What a wonderful performance by both the teams today, and Avengers just missing out there by 3 runs. Congratulations to Accenture team that they won this match by 3 runs.